ठीक है, लेट अस बिगिन। सो सबसे पहले ट्रेन सेट से आप क्या समझते हैं, आप मुझे बताइए। ये आपको सामने दिख रहा है, आज अभी का विषय है इस सेशन का, द टॉपिक इज ट्रेन सेट्स। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेन सेट्स? दैट इज द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू। एनीवन? Good morning, sir. Rakesh from Adhesion. Sir, Yes, please. Trainset means there is a distributed power instead of one prime mover, that is all. Wonderful, sir. Thank you for that answer, and you have summarized it very well. So there could have been many ways to answer that question, but that was a very short and crisp answer, and that is what I have also in my PPT. What is a train set? A train set is basically a distributed power rolling stock. ठीक है? तो train set is nothing but a distributed power rolling stock. DPRS, रेलवे पार्लेंस में, इंडियन रेलवे पार्लेंस में हम DPRS कहते हैं इस चीज को, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक। ट्रेन सेट वही है, but question is distributed power rolling stock क्या है, and how is it different from the current trains जो हमारे generally जो operate हो रहे हैं आजकल, उससे अलग कैसे है? तो can someone tell me कि distributed power rolling stock क्या है, इसमें क्या खास है, इसमें क्या अलग है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक में, ये आप मुझे बताइए। The tractive effort is distributed in some part of the formation of the train. Hello. Hello, yes, please. Sorry, please repeat. Who was saying something? So the tractive effort is distributed in some portion of the particular rake of the train. The Okay, tractive effort is not concentrated, sir. Okay, the tractive effort generation point is not concentrated. It is distributed across the rake. Very good, very well put. बहुत ही सही बात है। और कोई बताना चाहेगा? Sir, I think it is just like hello, sir. Hello. Yes, please. Sanjeev goes for some Tirupura workshop, sir. I think, sir, it is combination of some tailor coach and motor coach, just like EMU, sir. Yes, exactly. It is a combination of trailer coaches and motor coaches, just like EMU. बिल्कुल, ये भी correct answer है. Very good. So all of you are correct. Whatever you have said, as per Indian Railway Rolling Stock Code, distributed power का जो definition है, it is a लंबा चौड़ा English definition, है ना, in which it is written that they are a class of vehicles fit to move on railway system, and one where the propulsion system and the power wheels or the tractive force are distributed over more than one and mostly large number of vehicles. तो थोड़ा सा देख के लग रहा है कि ये क्या लंबा चौड़ा लिखा है, बट ये कहना यही चाहते हैं कि जो ट्रैक्टिव फोर्स है, ट्रैक्टिव एफर्ट है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. ओके, सो दिस ट्रैक्टिव फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड over more than one or mostly large number of vehicles. By vehicles we mean key coaches, है ना, कि we have individual coaches, so we can say, or we have multiple number of axles, we have multiple bogies. So जो ट्रैक्टिव एफर्ट आता है वो मल्टीपल कोचेस से, मल्टीपल बोगीज से, मल्टीपल एक्सेल्स के थ्रू हमें मिलता है. ओके, so and it is distributed across the entire rake. Okay, so how is it different, and how is it different in comparison to the normal rolling stock which we are seeing in operation? अभी जो कन्वेंशनल रोलिंग स्टॉक वैसे हम जो आजकल देखते हैं कि एक लोकोमोटिव रहता है, there is always a locomotive in the leading, and in the trailing side we have a lot of coaches, है ना. This is just a simple illustration, and but in a distributed powertrain it is a little different here. Here we have many coaches which you can say which are powered coaches, so-called powered coaches. So these coaches are in itself, you can say they are in itself a locomotive. खुद से एक locomotive का काम करते हैं. इन coaches को आप motor coaches भी बोल सकते हैं. That is what we call them motor coaches. Why do we call them motor coaches? इसमें क्या ऐसा होता है जिस वजह से हम इनको motor coach बुलाते हैं? We call them traction motors are available in that coach. Wonderful, very good. So the blue wheel here, the wheels which are showing in blue color, it means that they are powered wheels. They are powered wheels. That means they have a traction motor, है ना. वो एक्सल के साथ जो है एक ट्रैक्शन मोटर लगा हुआ है. Okay,
So in a locomotive also, these are all the blue wheels, and each and every axle in a locomotive, it is powered. They have traction motor. Okay, we have 6 axles, so we have 6 traction motors in locomotives. Okay, no issue, no problems with that. But if you start counting, what is the total number of axles? What is the total number of axles? 1 minute, please. Sir, why is not getting clear, sir? Sorry, I just got a call. So what I was saying that in a locomotive, when you start counting कि कितने axles powered हैं, how many axles have traction motor, divided by how many, what are the total number of axles, तो वो जो ratio आप पाएंगे, that ratio will be very less. Whereas in a distributed power rolling stock, the number of axles which are powered divided by the total number of axles, that would be comparatively greater. वो comparatively ज़्यादा होगा. Okay. And that is why ये जो distributed power technology है, this distributed power technology, ये it is considered to be in many aspects better than this concentrated power. Okay. So हम लोग concentrated power हमारे पास trains थे. Okay. But now we are moving towards distributed power train, and that is primarily because number of powered axles is more in case of distributed power train. Number of powered axles is more, it is greater. So powered axle greater होने से क्या फायदा होता है? I am saying that number of powered axles ज्यादा हैं. For example, इस simple illustration में यहाँ पे 4 powered axles हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 powered axles हैं. So my question is कि powered axles ज्यादा होने से what is the advantage that we are getting? Quick acceleration. Yes, we get faster acceleration and deceleration. So that is one very big advantage we get. Okay. Any other advantage? कोई और इसमें advantage हमें मिलता है? Drafting forces will be distributed among the CBCs. Absolutely correct. The draft force, the coupler forces, it is uniformly distributed. In case of a locomotive, the coupler force here will be, of course, very high. And then there will be here, it will be again little lesser, and आखिरी कोच तक तो बहुत कम हो जाएगा coupler force. So in a concentrated power train, we have something called as a differential coupler force or a differential draft force, which was mentioned by Mr. Reddy. Whereas in distributed power train, we have a slight differential, but it is more or less uniform. Okay. And what is the advantage of having such a uniform coupler forces? What is the advantage which we can have, which we can say that we have? To avoid jerks and also jerks. Passenger comfort. Comfort riding. Yes. So the jerks, because I think you must have observed that now we are getting those jerk-free type of balanced draft gears. But before that, when we used to have this coupler CBC, in many trains we used to get the jerk. Even in the good Rajdhanis also we used to get the jerks. Okay. So that kind of a thing is not something which is preferable. And now if we have a distributed power set, that jerk will not be there. It will be very smooth. Okay. And that is one big advantage. Any other advantage? From maintenance point of view, one practical, from maintenance point of view, something which you can visualize. Okay, the coupler, of course, the coupler maintenance would be an aspect that has also already been mentioned, but any other factor? No. You see, here what is happening? What is happening here is that in a concentrated power rolling stock, all the tractive effort is to be obtained from this limited patch. Okay, from this limited patch, from this limited surface area, we have to extract all the tractive effort for the entire rake. Okay, so in this case, just think about the track condition here, the amount of stress, the amount of fatigue that will be created in the track at this particular point where the locomotive is going. Just think about it and compare it to that which will be created for these motor coaches here in a distributed power rolling stock. Will there be a difference? Exactly, sir.
There will be difference, है ना? Yes, sir. Because we are not concentrating the tractive effort at one point, we are distributing it, the values will be lesser. So from the track health point of view, what inference can you make? Adhesion will be get more, sir. Adhesion more, good स्ट्रेस adhesion. कम होगी सर. Stress come हाँ, over. मतलब ओवरऑल देखें, लेमैन लैंग्वेज में बोले कि ट्रैक का हेल्थ बेटर रहेगा इन जनरल इन द लॉन्ग रन. कैन आई से इट और नॉट से इट? मतलब एटलीस्ट फ्रॉम द ट्रैक्टिव, दिस इज समथिंग व्हिच वी जनरली डोंट हाईलाइट. We say that all our जो ट्रैक में डैमेज होता है वो that is to the flat tire or all these kind of things. But another, let me tell you, other defects in track also occur due to this huge tractive effort which is being applied by the locomotive every time a locomotive hauled train is going through. Okay, so that thing will be something which we can avoid. Okay, and similarly on the other side, from the wheel point of view also, although locomotive wheels are designed accordingly to take that big amount of stress, but still here in the motor coach you may not have to spend that much to design the wheel as much. Okay, because your wheels will be more or less comparatively, the amount of stress that will be created at these points will be comparatively lesser. Okay, so these are some of the advantages. We'll see other advantages also in the future slide, but this is the basic thing. Okay, so distributed power rolling stock. Now we are talking about a train set, है ना? Train set जिसमें power distributed है. But the question is कि power, from where will the power come? From where will the power come? Can anyone tell me? Power कहाँ से लेंगे? Traction motors and OH, from OH to हाँ, OHE. So OHE, it is an external power source. exactly. It is an external power source. Yes, Okay? sir. Because we are taking it, okay, OHE, we are taking from an external OHE from where the power is coming externally. Okay, it is not inside the rolling stock. But there can be internal power source train set also. Yes or no? Yes, sir. Diesel engine set. Like diesel, like DEMU, है ना? So diesel electric multiple unit, we have one session on demo today, second half. So we can have internal power source train sets also. We can have external power set train set also. And what else? Combination. A combination of both. That is a hybrid. Okay, क्या होता है hybrid में? What is there in a hybrid kind of a train set? We can use in shunting purpose or non-void sections. No, that I know, but what kind of technology is there in a hybrid train set? The technology point of view. No, like A diesel engine must be required to convert from diesel, that means fuel to electricity. So that is to internal power source में चला गया. तो diesel electric वाले में वो हो गया, but hybrid वाले में क्या है कि you should have a provision कि आपके पास internal power source भी हो और external power source भी हो. आप external power से भी traction generate कर सकते हैं, आप internal power से भी traction generate कर सकते हैं. Both options should be there. ठीक है. एक्सटर्नल पावर के लिए आपने OHE लगा लिया, मतलब सॉरी आप you have a pantograph to tap it, okay, that is okay. और उससे फिर आपने you have some transformers and you condition it, you send it to traction motor. But internal power एक hybrid stock में internal power कैसे generate करेंगे? क्या डीजल इंजन भी डीजल इंजन also? हैं? Solar engine, solar sir, from solar source sir. Solar is We can- I don't know whether we can extract sufficient energy from solar energy. I don't think so. For traction purpose, I don't think so. We can feed back to the. No, let me add here. Generally, the hybrid type of rolling stocks, of course they have the conventional mechanism of an external power source like an EMU, but in combination they also have something called as a big battery set. Okay, the battery which we know, है? But this battery, obviously, this capacity of this battery needs to be huge to drive for tractive purposes. And so what happens that in OHE section, okay, we can raise the panto and we can work in the OHE section, the train can gain traction, no problem. But in non-OHE section, then it becomes battery operated. So how does it become battery operated? That the battery, in what form does battery store electricity? किस फॉर्म में रहता है उसमें? ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट? नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट उससे मिलेगा या डायरेक्ट करंट मिलेगा? डायरेक्ट करंट मिलेगा. बट हमारे ट्रैक्शन मोटर्स, क्या आजकल आपको लगता है डीसी ट्रैक्शन मोटर से हमारे पास हमारे रोलिंग स्टॉक में?
Most of them are AC. DC. मोस्ट ऑफ देम आर एसी। तो क्या, तो डीसी बैटरी से एसी ट्रैक्शन मोटर चलाने के लिए हमें कौन सी वो एक्स्ट्रा चीज चाहिए? व्हाट डू वी नीड हियर? समथिंग Inverter, sir. वेरी गुड। Inverter. So we need an inverter. Okay, okay, ठीक है, इन्वर्टर भी दे दिया आपको। We are giving a powerful inverter and all those things we have provided, and okay, done. So battery से आपने power कर लिया। So the non-OHE section में you can use this the battery set to power the rolling stock, but of course it comes with significant drawbacks. And this hybrid type of train set, mostly it is under trial, matlab it is being used, but it cannot be used extensively for long distance, long runs, or even there is a speed limitation also when you are talking about hybrid rolling stock. So in India specifically, we use them for shunting purposes. There are some example of hybrid locomotives. Locomotive अलग चीज होती है. I'm talking about a hybrid train set. So hybrid train set type की चीजें we can use only for a limited purpose only. ठीक है. But the concept exists. That is the point. लेकिन कॉस्टली तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना सर। इन्वर्टर भी कॉस्टली होता है, बैटरी भी कॉस्टली होता है। हाँ, They will occupy the size also very much big. हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप there will be a huge weight penalty also, I think. No, but requirement, we must consider the requirement. Our requirement is that our train set should be able to work in a section which is electrified also, and also if there is a non-electrified portion also, it should be able to work. So how do you address? So when there is such kind of a problem, then उस case में वो cost वाला part तो वो आप always you can justify the rate of return. But the problem is कि you have to decide whether आपको hybrid type के train set use करने हैं, या आजकल दूसरे का हाइड्रोजन फ्यूल सेल टाइप के प्रोपेल्ड रोलिंग स्टॉक्स यूज करने हैं, या फिर आपको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करके इवन इन नॉन रेवेन्यू अर्निंग सेक्शंस में भी आप 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करके आपको इलेक्ट्रिक ट्रेन सेट्स ही चलाने हैं या इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने हैं. दैट इज अ पॉलिसी मैटर, विल नॉट गेट इनटू इट, बट ऑप्शंस एग्जिस्ट. मतलब ऑप्शंस बहुत सारे, ऑप्शन डिस्कस करने में वी आर नॉट रॉन्ग इन डिस्कसिंग ऑप्शंस. दैट ऑप्शन इज देयर फॉर हाइब्रिड स्टॉक्स. Okay, so this is, I'm showing the Delhi Metro, this rolling stock. I think many of you have traveled in some form of metro. This is just Delhi Metro I'm showing. So what do you think? Is this a train set? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. train set है. You said train set है. Very good. Yes, And sir. ये, and what is this? ये क्या है? This is also a train set. But what is this? Sorry? Train set. No, this is a train set, but have you ever seen this? ये कौन सा train है? कहाँ पे है? And why am I showing this? This is bullet train, sir. Very good. This is the bullet trains, and this is specifically the E5 series, the E5 series of bullet train, which India is going to acquire from Japan. And we'll be using this kind of rolling stock only when the bullet train project, when it starts. Okay, so ये रहेगा. So one very Mr. Kushwaha, Mr. Angad Singh, please microphone. हाँ, okay. So one thing that is very important here, that these train sets, ये bullet train और ये जो train sets होते हैं, इनमें almost 100% power train sets इनको बोला जाता है. It may not be fully 100%, but 90 to 95% power train sets होते हैं ये. So what is the meaning of powering? ये पावर्ड मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? पावर तो यार बिजली अंदर तो रहेगा, लाइट जल रहे हैं, एसी चल रहा है, वो तो ठीक है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100% पावर ट्रेन सेट व्हेन आई एम सेइंग दिस? Axles are connected with electrical motors. All the cars are Still connected to power, sir. Sir, all the axle All will axles be are- motor mounted, means हाँ, right, correct. So जब when someone asks you कि पावरिंग का मतलब क्या है स्पेसिफिकली ट्रेन सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे थोड़ा माउस से लिखने में दिक्कत हो रही है. So आपको अगर पूछा जाए कि पावरिंग का मतलब क्या है ट्रेन सेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पावर that is not the supply power for the hotel load, that is the power for the tractive load, that is the propulsive load. Okay, so 100% powering means each and every axle of this bullet train has a traction motor, as simple as that. बुलेट ट्रेन में ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एक्सल जो बुलेट ट्रेन में है, उस सब में एक ट्रैक्शन मोटर लगा हुआ है. ठीक है, ईच एंड एवरी एक्सल इज पावर्ड. सो टू कंपेयर, ऐसा क्यों करते हैं और इसका क्या एडवांटेज है, मैं आपको
I'll ask you a simple question कि the cars which we are using, हम लोग जो मार्केट में जनरल हम लोग कार जो खरीदते हैं, मान लीजिए मारुति की कोई कार आप ले लीजिए, तो उसमें जो है आपने सुना है 2 व्हील ड्राइव होता है, 4 व्हील ड्राइव होता है. Have you heard about it? 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव. Yes, sir. Rear wheel drive. Two-wheel drive. हाँ. So what is the difference here? 2 wheel drive and 4 wheel drive. What is the difference? Just two axles will have tractive forces, sir. Just like military vehicles. हाँ. Like Tesla motors have all four wheels equipped with motor. Yes. So advantage क्या है? जब हम हमारे नॉर्मल सेगमेंट में हमें जो गाड़ी मिलता है वो तो 2 व्हील ड्राइव होते हैं मान लीजिए. तो 4 व्हील ड्राइव आप बोल रहे हैं मिलिट्री व्हीकल्स और टेस्ला और ये हाई एंड जो Tractive forces will be more, sir. yes, मोस्ट प्रेडिक्टिव एफर्ट रहेगा सर. Wheels will not be there. because all the 4 Four wheels wheels move at a time, sir. all the 4 wheels will try to produce get that tractive effort for you. Okay, all the 4 wheels will be involved in getting that tractive effort for you. That is the core concept. So and that is why in a rough terrain आप ले जाएंगे तो मिलिट्री व्हीकल्स रफ टेरेन में जाती हैं तो उनको चाहिए होता है ना. दैट इज वी हैव दैट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट. सो इन ट्रेन सेट्स व्हाई वी हैव दिस मच अमाउंट ऑफ पावरिंग, बिकॉज वी नीड ओके द टेरेन इज नॉट मे बी रफ, बहुत रफ टेरेन नहीं है, इसमें तो स्ट्रेट ट्रैक रहता है जनरली, बट व्हाट वी नीड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेलरेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी रिक्वायर इज एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन के लिए हमें ये powered train sets चाहिए. The higher is this number, the better we can say will be the starting acceleration. Starting tractive effort भी आपको ज्यादा मिलेगा, आपको initial acceleration भी काफी ज्यादा मिलेगा. Okay. Now just a few concepts of traction, just because this is the train set course, and I need to justify to you that why we have shifted from concentrated power rolling stock, or even why Indian Railways is planning to shift from this locomotive halt concentrated power rolling stock system to distributed power system. ट्रेन सेट्स की ओर हम लोग क्यों ग्रेविटेट कर रहे हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना जरूरी है. हमें मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक विल बी बेटर. ओके, वी कैन प्रूव इट मैथमेटिकली. ओके, सो अगर आई डोंट नो वेदर मोस्ट ऑफ यू हैव स्टडीड दिस और नॉट, अगर आप किसी भी रोलिंग स्टॉक का ट्रैक्टिव एफर्ट वर्सेस वेलोसिटी स्पीड कर्व अगर स्टडी करेंगे तो वो कर्व इस टाइप का मिलेगा. ठीक है, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप ऑफ अ कर्व. मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड विल बी लेस. वेलोसिटी आपका रोलिंग स्टॉक का जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, लाइक दिस द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, बट द अमाउंट ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड विल बी लेस. बट द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि एट फॉर स्टार्टिंग ऑफ द रोलिंग स्टॉक we need huge amount of tractive effort. We need the greatest amount of tractive effort to overcome the initial friction, है ना, static friction. उसको overcome करने के लिए हमें great amount of tractive effort चाहिए. और फिर जैसे जैसे speed बढ़ेगा उसके साथ साथ velocity हमारी tractive effort requirement will be less. Okay, so power, जो भी ट्रैक्शन सिस्टम हम बनाते हैं वो एक पावर रेटिंग के हिसाब से बनाते हैं कि इतना पावर सप्लाई करेगा. ओके, we talk in terms of power. For example, you must have heard of locomotives. 6000 HP locomotives, 12000 HP locomotives. So what is ये HP किस चीज का यूनिट होता है? But HP किस चीज का यूनिट होता है? Horse power. It is the unit of power. It is the unit of power. The important thing to note here is power is a multiplication of force and velocity, or power is a multiplication of tractive effort and velocity. Okay, so एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे याद रखें कि अगर आपको एक पावर आपने फिक्स कर दिया, आप रोलिंग स्टॉक बनाएंगे, एक फिक्स पावर के लिए बना दिया आपने, मान लीजिए आप 6000 HP के लिए बना देते हैं, 6000 HP के लिए आपने रोलिंग स्टॉक बनाया. ओके, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, आइदर यू कैन यूटिलाइज द ट्रैक्टिव एफर्ट एस्पेक्ट टू यू कैन यूटिलाइज द लोकोमोटिव टू गेन ट्रैक्टिव एफर्ट, और यू कैन यूटिलाइज इट टू गेन स्पीड. आपको दोनों नहीं मिल सकता, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको दोनों नहीं मिल सकता. यू कैनॉट गेट बोथ. ओके,
अगर आपने लोकोमोटिव का गियर रेशियो और वो इस टाइप से डिजाइन किया है कि आपको आपका मेन फोकस है टू गेट ग्रेटर ट्रैक्टिव एफर्ट, और सो फॉर द सेम पावर आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा, आपका स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, जो जनरली होता है आपके गुड्स लोकोमोटिव्स में। जो गुड्स लोकोमोटिव, गुड्स ट्रेन प्रोपेल करने के लिए जो लोकोमोटिव होते हैं, उनके गियर रेशियो को ट्वीक किया जाता है इन सच अ मैनर सो दैट कि हमारी स्पीड लिमिटेड रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा मिलेगा। व्हाई डू वी नीड ग्रेटर ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर अ गुड्स ट्रेन? क्यों चाहिए ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा? To haul more Load loads. is very high. हाँ, द लोड इज वेरी हाई। And its payload तो is very high. हाँ, तो यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड एक्चुअली डजंट मैटर मच। ऑफ कोर्स इट मैटर्स नाउअडेज, बट इट अर्लियर इट डिडंट यूज टू मैटर मच। हमें ये लगता था कि हम लोड को खींच के बस ले जाएं डेस्टिनेशन तक, दैट इज हमारा काम हो जाएगा। बट जब पैसेंजर ट्रेन की बात आती है, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ ट्रेन सेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पैसेंजर ट्रेन्स, what will be our preference? Will it be tractive effort or will it be velocity? Velocity. Velocity, sir. It should be velocity. It should be velocity. So power point of view से, है ना, we should design our traction motors in such a manner. We should design our wheel slip control or our traction control system in such a manner so that we can extract the maximum amount of speed. We can get maximum amount of acceleration. We can get maximum speed, है ना, with that power rating. Okay. ट्रैक्टिव एफर्ट बस इनिशियल स्टार्टिंग के लिए चाहिए, उसके बाद ट्रैक्टिव एफर्ट जो है, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा नहीं होती। बट ये जो मैंने कर्व दिखाया, इसके कुछ लिमिट है। ट्रैक्टिव एफर्ट यहाँ से एक लिमिट से ज्यादा आपको ट्रैक्टिव एफर्ट नहीं मिल सकता। ओके, दिस ये एक डैश बना हुआ है, यू कैनॉट गेट ट्रैक्टिव एफर्ट बियॉन्ड द पर्टिकुलर लिमिट इन केस ऑफ रेलवेज। व्हाई इज दिस देयर, व्हाई इज देयर अ लिमिट हियर? There may be chances of wheel slipping, sir. हाँ, देयर विल बी चांसेस ऑफ व्हील स्लिपिंग। ये जो लिमिट लगा है, ये इस चीज की वजह से। हमारे जो व्हील है और रेल के बीच में जो कांटेक्ट पैच है, इसके बीच में फ्रिक्शन होता है, वो दैट इज द फ्रिक्शन व्हिच फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। इट इज इवल ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें लॉसेस होती हैं, हीट प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, बट इट इज नेसेसरी बिकॉज फ्रिक्शन इज दैट थिंग व्हिच अलाउज अस टू रोल। ओके, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रोलिंग वी कैन नॉट रोल, विल स्टार्ट स्लिपिंग। तो एक अमाउंट ऑफ हमें फ्रिक्शन चाहिए। तो लेकिन फ्रिक्शन का भी एक लिमिट है। फ्रिक्शन बिटवीन ये पॉइंट, जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है म्यू, इट कैन लाई इन द रेंज ऑफ 0.35 टू 0.5, इस रेंज में हो सकता है जो अपने रेल और व्हील के बीच का फ्रिक्शन। बट कुछ कंडीशंस में वो इतना कम भी, अप टू 0.1 0.05 तक कम भी हो सकता है फ्रिक्शन। So lesser friction is not good from the rolling point of view. We'll start slipping. Okay. So अगर स्लिपिंग नहीं भी हो रहा है, फ्रिक्शन आपको एवरेज 0.35 मानते हैं, अगर सही भी है, तब भी ये 0.35 आपका जो एडेसिव लिमिट है उसको लिमिट कर देता है। ओके, इसीलिए वो ऊपर एक लिमिट है, मैंने एक लाइन दिखाया था। ओके, देयर कैन बी मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट एडेशन। और जो एडेशन जो होता है, अच्छा, व्हाट इज एडेशन? इफ समवन कैन जस्ट टेल मी। I hope everyone knows what adhesion is. It is a reverse force, sir, actually. Movement को against में. Why do we need adhesion? And specifically from the point of view of a train set, designing a train set, why is adhesion important for us? To rotate, sir. To rotate. Sir, it is a frictional resistance to able to move the wheels in forward direction. We should be able to rotate, and since we have multiple powered wheels here, so all our wheels should be able to produce adhesion. Yes or no? है ना? Together, all our wheels. लोकोमोटिव में क्या था ना, लोकोमोटिव में डिजाइनिंग में ये थोड़ा आसान ये इसलिए रहता है कि आप फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग एडेशन, यू ओनली हैव टू कंसंट्रेट ऑन लोकोमोटिव। ओके, आप लोकोमोटिव डिजाइन, लोकोमोटिव में आपने स्लिप कंट्रोल और वो सिस्टम डाल दिया, you have programmed it accordingly, and you can get that advantage. But in a train set it becomes much more complicated now, है ना। इन ट्रेन सेट में आपको एडेशन, आपको मल्टीपल रोलिंग स्टॉक से, आपको मल्टीपल कोचेस से एडेशन चाहिए। यू नीड एडेशन फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट्स, so that design becomes very important. Now my simple question is there are two trains, है ना, ये ट्रैक है और चलिए दो कोचेस। Someone's microphone is on.
किसी का माइक्रोफोन वो डैमेज है, तो खराब है माइक्रोफोन सर, ये सब रिपेयर नहीं होता है राहुल सर। का थिंग विच कैन बी रिपेयर्ड उसको कर नहीं रहे सर, ये तो रिपेयर नहीं हो सकता है। आप ईबीसी रिपेयर करवाइए सर, राहुल जी इमरजेंसी आपका लाइट माइक म्यूट करो। रिपेयर करवाइए। Okay, so I have removed Mr. Rahul from the meeting because I had earlier warned that you should be able to control your microphone. If you are not, then you will be creating a disturbance for the class, and we cannot allow that. Sorry. So, okay. So, my question is the question which I wanted to ask. There are two coaches. Okay. This is coach number one. This is another. There is coach number two. Okay. Forgive me for the poor drawing, but the weight of coach number one is W1. ओवरऑल वेट मतलब कैरिंग कैपेसिटी, टेयर वेट सब मिला के, या एक्सल लोड भी मान लीजिए आप, एक्सल लोड ओवरऑल जो एक्सल लोड फाइनली जो एक्सल लोड आ रहा है W1, इस कोच का जो लोड है वो इट इज ग्रेटर देन W2. ओके, W1 इज ग्रेटर देन W2. नाउ माय क्वेश्चन इज कि इन विच ऑफ दिस कोचेस डू यू एक्सपेक्ट टू गेट बेटर ट्रैक्टिव एफर्ट? W1 दिस इज कोच नंबर 1, दिस इज कोच नंबर 2. ट्रैक्टिव एफर्ट किसमें ज्यादा मिलेगा आपको? नंबर 1 में. Okay, you will get a. Why would we get a tractive effort in coach number 1? It is having more weight, sir. I mean load. Equally, it will reflect on some. I mean tractive effort. Reverse force. Yes, will come. so you know the frictional. When we used to calculate frictional force, what was the equation? The equation used to be the coefficient So of the friction. adhesion is very high in second case. Yeah, no, in second case or first case? In second case, W1, adhesion will sir. be poor. W1 case adhesion will be very high. So Sir, mu into normal reaction. हाँ, mu into normal reaction. Now, normal reaction is the vertical load कितना नीचे आ रहा है. तो आपका vertical load अगर ज्यादा आ रहा है नीचे आपके wheel पे, इसका मतलब ये जो force है, this force, frictional force, which we are calling finally the adhesive force जो हमें आगे की ओर मिलेगा, that will be more. Okay, that will finally give us the tractive effort, the rotary motion that will give us help us in getting the tractive effort. So we generally say that ये जो weight जो ज्यादा है ना, इस केस में हम कहते हैं कि इस कोच का adhesive mass ज्यादा है. The adhesive mass of this first coach is more in comparison to W2. Okay, so greater adhesive mass is good. That is something which we desire. Okay, so locomotive क्या है? When you design locomotives are already 120-130 ton. They have a huge adhesive mass already. So that advantage we are already having. But when we are designing train set, can you expect it to be the same weight of a locomotive? The motor coaches? No, sir, no. It is not that. It is not that. So आपको अगर good amount of आपको adhesion चाहिए, तो you need some other systems to get that amount of adhesion, है ना? So you need from आपको फिर वहां पे ये जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. You need to have some torque control characteristics method to do. You need to work on the traction motor characteristics, है ना? Power circuit configuration and slip control, very important. मैंने आपने सुना होगा advanced slip control. Slip control becomes very important in these cases also. Okay, because from the mechanical side, we are already losing out on the weight. Okay, so हमें ये electrical point of view से हमें उसको यहाँ पे compensate करना पड़ेगा, and that is what is being done in train sets. है ना? Traction management becomes a very important thing. Okay, so as per the law of traction, you said that 20 ton is the vertical force, so it is the normal reaction also multiplied by the coefficient of friction. So this 6 ton is my tractive effort which I will be getting. Okay, this is the 6 ton is the tractive effort which I will be getting from one wheel. Okay, but again we'll come back to that tractive effort versus velocity curve. Velocity का भी जो है, आप velocity भी कितना आपको मिल सकता है उसका भी एक limit है. There is a limit. ऐसा नहीं है कि आपको infinite velocity मिलेगा. एक point के बाद आपका velocity cut off हो जाएगा. And what will decide that limit? The engine design. Okay, ये vertical side पे adhesion limit था, इस side पे आपका engine design is your limitation. What is engine? Specifically by engine तो वो internal power source diesel engine में engine design becomes a factor. Okay, but electrical point of view से भी अगर आप देखेंगे, there are many other things which will limit your speed. Okay, for example bearing design.
This will limit your speed. Vibration will limit your speed. Mechanical transmission systems, track structure, these things, track and structure, ये तो बहुत बड़ा factor है, which will limit your speed. So your speed will get limited. So finally, the curve which we get for any tractive effort curve for a power rolling stock वो इस टाइप का होगा. और इसी के अंदर हमें करना है, काम करना है. ये अवेलेबल है. ये जो रेंज है, this you have to exploit. इसको हमें exploit करना है as per as requirement. This area we need to exploit. But यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है. There are other resistances also of a rolling stock, to moving of a rolling stock. Okay. What are the kind of resistance which a rolling stock faces? Anyone? Aerodynamic. Aerodynamic. Okay. ये point ये जो C है इधर. Aerodynamics आ गया इसमें. और we have rolling resistance. Yes, sir. Generally the rolling resistance, the resistance from the bearing, है ना? We have the resistance at the rail wheel interaction point. Obviously rail wheel interaction point पे friction है ना? तो वहां पे भी थोड़ा उससे resistance आएगा. Okay. So there is one person, Mr. Davis, who coined this equation, Davis equation, and from that equation, A plus BV plus CV square, इस equation से देख के what we can infer is, very important point which we infer is that at low speeds, जब आपका speed कम है, for example 50-60 kmph तक, मतलब इधर तक 50 kmph तक भी अगर आप देखेंगे, at low speeds, your the journal resistance, the bearing resistance, this is a dominating factor which affects, which dominating resistance for low speeds. But when the speed starts increasing for higher speeds, which is the dominating factor? What kind of resistance dominates at higher speeds? ये रेड एरिया में क्या है? एयर रेजिस्टेंस है सर. एयर रेजिस्टेंस. ओके. और ये जो ट्रेन सेट हम बना रहे हैं, फाइनली व्हाई वी आर मेकिंग दिस ट्रेन सेट? This is to attain greater speeds. We want to operate a train in semi-high speed and high-speed territory. So what do you think? Which will be the one of the most prominent resistance which will be affecting us here? Air resistance. Air, sir, air. Air resistance. Okay, please make a note of this point. When we'll talk about the basics of some train set rolling stock design, I will come back to this thing, that why we need to design a rolling stock in order to combat or tackle air resistance. Okay, I hope this graph is very clear to everyone, that at higher speeds, because we are now talking about higher speeds, at higher speeds, these coefficients become more or less constant. The flange resistance, rail wheel attraction resistance, or your even your journal resistance. But what is increasing exponentially is your air drag. That needs to be addressed. Unfortunately, we have not been able to do that in our rolling stock design till date. Okay, so now this अब ये सारे resistance को, when you start adding these resistance in the plot, we finally come to something called as a balancing speed. We reach a balancing speed on the plot कि ये maximum speed है, is at this particular speed all the forces balances out. Okay, so this is one of the examples. This is one of the examples of how to minimize air drag. What do you observe in this particular image? What are you able to observe in this particular? Air will escape from the body, sir. I mean, it will not. Air will escape from the body. How is our rolling stock different from this particular, this Chinese rolling stock which I am showing? No, our construction is a straight construction, sir. Contact areas will more, and there is no sliding surfaces for air. So to start with, generally our locomotives of our trains, they do not have these type of a nose cone type of an arrangement. We do not have this kind of an arrangement. Why do we have this nose cone type of an arrangement? To divert the air. Divert the air. And so if the air, because this is the first thing which hits the air column, so the air should be, go like this, and the flow of air, the more turbulent it becomes, the more resistance it will affect, it will create for the rolling stock. So we do not want to create a turbulent atmosphere here. So we want more of a laminar flow. So that is why, okay, that is one reason why for which we provide this nose. Is there any other reason why we provide the nose? You must have seen in all the high-speed trains, the front portion is always pointed. Even in the Vande Bharat Train 18, which we'll be talking about in this course more often, we have a nose cone, FRP nose cone, a little pointed one. We have to split the air curtain, sir. We have to split that air.
So split the air, okay, that aerodynamically that is the same answer which you said earlier, but there is another very important point which we are generally not aware about. The point is that when these rolling stock, they enter tunnels. Of course, when you are creating a high-speed rail network, you will have tunnels. You will have a lot of tunnels because you cannot afford to make complicated curves. You cannot afford to have ghat sections. You cannot have. It is not possible. So you will have tunnels. You'll have to bypass all those ghat sections. You cannot have rising gradients. मतलब up to a limit हो सकता है, उससे ज्यादा rising gradient नहीं हो सकता. एक लिमिट से ज्यादा कर्व्स नहीं हो सकते. तो आपको टनल्स बनाने पड़ेंगे. अच्छा, जब टनल्स में when a train is entering at any speed greater than 180 kmph or 200 kmph, there is a phenomena which occurs which is called as tunnel boom. Tunnel boom. Have you heard about tunnel boom ever? Anyone in this class? यस क्या है बताइए, देवत्र बताओ. टनल बूम में आवाज आती है जब ट्रेन एग्जिट करता है तो उस टाइम पे बहुत जोर से आवाज आती है. तो हाँ, नॉट ओनली एग्जिट पे, वी हैव अ टनल. हाँ बताओ देवत्र. हाँ, जब एग्जिट होता है बेसिकली उसके अंदर जो एयर का कॉलम होता है उसको धक्का मारते हुए ट्रेन जब निकलती है, तो एट दैट टाइम व्हेन द ट्रेन एग्जिट्स, तो उस टाइम पे वो बहुत जोर से आवाज होती है. एंड एज फार एज आई कैन रिकॉल, जो रिसेंटली अभी टनल्स बनी है उसमें उसका जो शेप होता है उसका भी ऐसे ही कर्व्ड रहता है. इट्स लाइक टॉप से, so that the air can escape when the train is like coming out of the tunnel. Wonderful, very good, very good. So what happens exactly is, as Devatra pointed out, that when a high speed train, by high speed I mean speeds greater than 200 kmph, even 180 तक भी मान लीजिए, जब such a rolling stock enters a tunnel, तो surface area ये है entry surface area of tunnel. और आपके रोलिंग स्टॉक का एंट्री सरफेस एरिया अगर ऐसा रहेगा लाइक अ रेक्टेंगल, so what you are doing is you are deflecting a great, suddenly you are impacting a great column of air all of a sudden. So what that will create is at the other side of the tunnel, back end of the tunnel, अगर टनल का अगर कहीं बैक एंड रहेगा, वहां पे वो एयर कॉलम वहां से सडनली वो एयर कॉलम एक्सपेल होगा वहां से, ठीक है, क्योंकि यू आर सडनली एंट्रिंग. तो दैट विल क्रिएट एन एक्सप्लोसिव साउंड. It sounds like, actually sounds like an explosion. Okay, there are videos about this. Okay, the Japanese have done extensive research on it. Not only the Japanese, the Europeans also. So a explosive sound create hoga. So that is not good for the people living nearby or even for the wildlife and all those point of view. And also it creates a great amount of resistance also. Okay, it creates a great amount of resistance to the rolling stock also. So that is why, in order to diminish the cross section, we have a tapered cross section. इसमें क्या होता है कि जो क्रॉस सेक्शन है, it varies with distance. ठीक है, with chord, मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन at the front end, the cross section is very small. थोड़ा सा आगे जाएंगे क्रॉस सेक्शन थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा बढ़ा. तो this kind of a cross section, it reduces this tunnel boom, this explosive sound significantly. It reduces the resistance, sudden resistance which air drag which a train experiences while entering a tunnel. So that is one of the reason. Okay, अच्छा, तो okay, this nose पे तो बहुत बात होगी. और क्या दिख रहा है आपको in this design? Nose पे तो बहुत बात होगी. What else do you see which we do not have in our rolling stock currently in our coaches? What is this portion? There is no cross ventilation, sir. Cross ventilation, sorry. ये जो डिजाइन अभी स्क्रीन में है इसमें कोई खिड़की नहीं है, खिड़की सब बंद है. हाँ, खिड़की सब बंद है, ठीक है. ओके, सो इट इज लाइक, यू कैन से कि इट इज लाइक अ ट्यूब. इट इज लाइक अ एंड टू एंड ट्यूब, जिसमें आपका जो पूरा केबिन है दैट इज कंप्लीटली क्लोज्ड. ठीक है, एयर एंट्री होने का कोई स्कोप नहीं है कि उसमें हवा अलग से घुस रहा है. दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट. आप व्हेन वी डिजाइन हाई स्पीड ट्रेन सेट्स, जब हमें जनरली ट्रेन सेट्स, आप हाई स्पीड ट्रेन सेट जब बनाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोलिंग स्टॉक का पैरामीटर होता है कि कंप्लीटली एयर टाइट होना चाहिए. योर रोलिंग स्टॉक शुड बी एयर टाइट कंप्लीटली, कहीं से भी एयर नहीं आना चाहिए. बिकॉज इफ इट इज नॉट एयर टाइट, so what will happen that agar if your train is going here in this track at 200 kmph and another train comes on this track from opposite direction at 200 kmph, what will happen? And you experience this phenomenon. You must have experienced this phenomenon also. Okay, due to the vortices which is formed between those two trains, it will again create a great amount of air drag, है ना?
and that will create a great amount of discomfort to the passengers. तो वो एक चीज है. प्लस टनल में जब एंटर करते हैं, आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे ट्रेन जब टनल में सडनली एंटर करते हैं तो वी हैव सम स्ट्रेंज फीलिंग इन आवर ईयर्स. सडनली प्रेशर ड्रॉप होता है. ओके, तो बिकॉज आवर टनल्स मोस्टली आर नॉट प्रेशराइज्ड, अब वो प्रेशर ड्रॉप होता है. So that kind of a phenomena, in order to avoid those kind of things, we need to completely seal the unit. Okay, तो sealed doors हैं. अच्छा, ये नीचे कुछ दिख रहा है here? Are you able to see something here? Are you able to see the bogie, the suspension system? दिख रहा है क्या? Nothing, sir. Nothing. What is the importance of this? Why is it provided? Why has it been provided? To avoid the entry of air. Just remember this point. I will talk about it in the coming slides. Okay, so we have a balancing speed. We have talked about it. So finally, what the point I wanted to make is, that mathematically we can prove that this is the basic. We used to make free body diagrams and we used to write equations of motion. अगर आप एक rolling stock का simplistic, this is a very simplistic equation of motion. It can be more complicated, but if we consider that this is a rolling stock which is going in this direction, है ना? So its acceleration, this ax is in this direction. Okay. What kind of resistive forces it can have? It will have a drag force in this opposite direction. It will have some maybe rolling friction force. All these resistance in this direction, and finally it will have a this TR. This TR indicates the trailing load force. Because your trailing load जो है वो force आपको पीछे की ओर खींचने की कोशिश करती है, तो ये force भी पीछे के direction में है. It is opposite to the direction of motion. So when you write this equation, you will find out that this n here, this is nothing but the number of powered axles. The n is number of powered axles. इस equation में the greater is n, the greater is the number of powered axles, है ना? The greater will be your acceleration. The greater is the number of powered axles, the greater is the amount of acceleration which you will be able to get. Right? So it is very important for us to have the greater number of powered axles in our rolling stock. Okay, if we want acceleration, if we want good amount of acceleration, we need to have greater amount of powered axles. Okay, and so that brings me to the advantages of distributed power. That what happens is the overall the axle load, the axle weights are lighter. Why is the axle weight light in case of a distributed power train set? Because of course we have distributed the traction motor across the entire rake. Okay, we have distributed a traction motor across the entire rake. We do not need to manufacture those heavy kind of locomotives with great axle loads. So axle weight becomes comparatively lighter. Now lighter axle weight, from adhesion point of view, from tractive effort point of view, it may not be good. Lighter axle weight from tractive effort point of view, it may not be good. अच्छी बात नहीं है. But from the velocity point of view, अगर आपको आपका final target है greater velocity attain करना, it is a good point. है ना? आपको अगर उसी power में greater momentum चाहिए, if you want greater momentum, so you can attain. If you have that amount of power and your overall mass is lesser, comparatively less in comparison to a locomotive haul train, तो आपको speed ज़्यादा मिल जाएगा. Okay. So this is kind of a trade-off, but from the velocity point of view, light axle weight is good. Okay, we get higher acceleration, deceleration. We have discussed. We get more cabin space since there is no locomotive. For passenger point of view, more cabin space, and we can utilize something called as the energy of regenerative braking. Okay, regenerative braking. समझ रहे हैं आप? What is regenerative braking? During braking, the kinetic energy that was stored in the rotor is get back to the batteries or resistor. We can supply to No, that is not regenerative. No, we can. What you said, resistor में waste. Overhead, yes. Overhead. To feeding to exactly. If we are wasting it, तो dynamic braking हो गया. But if we are supplying it back to the OHE, that is regenerative braking, because we are again sort of regenerating power एक तरीके से, है ना? तो वो हमने OHE को सप्लाई कर दिया, तो इस वजह से इसको कहते हैं एनर्जी एफिशिएंट होता है.
And I don't know the exact figure. I'm not an expert in this field, but the claims are that the regenerative braking based locomotives जो चलते हैं, trains चल रहे हैं, they save up to 30% tractive, 30% power. 30%. इसका मतलब कि अगर दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए आपको 100 किलोवाट पावर की जरूरत होती, मैं जस्ट ऐसे ही रैंडम फिगर बता रहा हूँ, आपको 100 किलोवाट पावर चाहिए, बट अगर आपका लोकोमोटिव में रीजनरेटिव ब्रेकिंग फीचर है तो आप बस 70 किलोवाट में दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाएंगे. दैट इज व्हाट इज द क्लेम. आई हैव नॉट वेरीफाइड इट. सम से दैट it is a very high claim. The actual figure is as less as 5%. But okay, I'm not an expert in this field. But even a 5% is good enough for us. Something is better than nothing. That is what I want to make. The point I want to make. अच्छा, यहाँ पे there is a very important schematic here, which I want to show that the Japanese were the first to adopt the distributed power technology to build a train set, high-speed train set, back in 1964. 1964 में इन्होंने बनाया. बट गौर करने वाली बात है कि उस टाइम पे बाकी जो हाई स्पीड ट्रेन सेट्स आई, मतलब ट्रेन सेट तो नहीं कह सकते, हाई स्पीड ट्रेन कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल द टीजीवी और द फ्रेंच टीजीवी और द इंटरसिटी एक्सप्रेस ऑफ द जर्मन्स, ये सब और इवन द स्पेनिश, ये सब कॉन्सेंट्रेटेड पावर पे था. मतलब 1996 तक तो कॉन्सेंट्रेटेड पावर पे फोकस रहा. मतलब एवरीवन वाज थिंकिंग दैट लोकोमोटिव हॉल्ट ट्रेन्स is something which we require. मतलब ये ठीक ही है. We should continue with loco. Even 2004 में भी कोरिया ने भी अपना जब डेवलप किया था हाई स्पीड ट्रेन, they preferred a locomotive haul train. But the trend has reversed in the last say 20 years. The trend seems to have reversed. जर्मनी ने अपने जो इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो थर्ड सीरीज निकाला था, they shifted to train set mechanism. Even the Spanish, इन्होंने भी अपना जो थर्ड सीरीज में थर्ड वो निकाला, दे शिफ्टेड टू दिस डिस्ट्रीब्यूटेड पावर काइंड ऑफ अ सिस्टम. चाइनीज ऑलवेज फॉलोड अ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर काइंड ऑफ अ सिस्टम. ओके, इन्होंने स्टार्टिंग से ही डिस्ट्रीब्यूटेड पावर लिया, 2008 में लिया. नाउ विद इन 14 years दे आर द वर्ल्ड लीडर्स टुडे, एंड सिमिलरली अदर कंट्रीज आल्सो. अब so the point I want to make is that the earlier there used to be a lot of debate about distributed power versus concentrated power, but it is quite a recent development. You can say just 20 years में ही ये development ये prove हुआ है कि distributed power is better, है ना. for a high speed train से point of view से आप distributed power लेंगे तो फायदे में रहेंगे. Sorry. Okay. So, what are the various type of distributed power rolling stock in Indian Railways which we are utilizing? We have the DEMU, EMU. We have the EMU, electric multiple unit. We have mainline electric multiple unit, the MEMU. We have semi-high-speed train set, and we don't have it, but we'll someday have it, a high-speed train set. Okay. So demo, I think diesel multiple unit demo के बारे में I think most of us know. We'll have a session on demo in the second half. So I will just skip this part. The very basic principle of demo is that it has a diesel engine power pack connected to an alternator here, somewhere here, and that converts the chemical energy of diesel into electrical energy that is supplied to the traction motors, and we get traction. वो demo का फंडा है, internal power source है. But electric multiple unit EMU में क्या होता है? EMU में we are tapping the energy from the OHE, है ना? From the OHE we are tapping it, and we are conditioning it. We are transformer में डालते हैं. Transformer के बाद 4-quadrant chopper हो गया, inverter हो गया. इसके through process करते हुए we supply it to the traction motors, and the traction motor then it provides us the tractive effort. And EMU is again an example of a distributed power rolling stock or a train set, because it has motor coaches, it has trailer coaches. इसमें motor coach भी होते हैं, इसमें trailer coach भी होते हैं. It is a combination of these things. Okay. And a MEMU भी similar principle है. The principle of MEMU is similar. There is not much difference between EMU and MEMU, apart from some dimensional differences and some axle load point of view से difference. EMUs are made for greater axle loads, to take greater axle loads, close to 20 ton, because वो super dense crush load लेने के लिए बने हुए हैं, वो suburban traffic के लिए बने हुए हैं. But MEMU जो है main line traffic के लिए बना हुआ है, तो इसको nominal axle load पे रखा गया है. तो that is the basic difference between EMU and MEMU. Otherwise कोई खास difference नहीं है. I have put up this slide where you can compare the difference between a conventional EMU and conventional MEMU.
This is of course the difference between the conventional ones, है ना, DC traction motor वाले, not the AC traction motor वाला. And then we have the train set, semi high speed train set, which Indian Railways has indigenously manufactured, ICF to be exact, it has indigenously manufactured. And isme, what is different in this train set in comparison to the conventional EMU or MEMU? There are many differences. During the course of this entire course, we will use. Okay, I have a question in the chat box. Someone has written a question. Okay, you can unmute yourself and you can ask me a question. If anyone has any question, please ask. Hello. So far clear, sir. No, in the chat box, there was one question. It suddenly popped up. Generally, what I request my participants is to unmute themselves and ask some question. It becomes easier for me rather than reading the chat. But okay, I'll see the chat. Sir, Akansh has written, sir, why DPRS trains are currently running in India are not used for long distance? That is a policy level matter, Akansh. Why is it not being used for, currently, I think the focus of using the train set is for, we are trying to use train set for intercity travel. That is what our initial plan is. Intercity travel से मेरा मतलब है 400, 600, 800 किलोमीटर, 850, 900 किलोमीटर तक का रेंज हम सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट से कवर करना चाह रहे हैं, which can have a speed in the range of max speed of in the range of 160 kmph, and also maybe it can go up to as much as 180 kmph in the near future if the track permits. Okay, but from the long distance point of view, we have not manufactured no sleeper type of train sets. So definitely that is a point which you can say, but it is a policy level decision. It can be made. There is nothing stopping us from doing that, but it is something which is related to policy. So I cannot comment much on that. Sir, I think Train 20 was also initially introduced, but not introduced, but it was told that. What was told? Something Train 18, Train 20 will be sleeper coaches. Will have sleeper coaches. No. As far as I am aware, ऐसा अभी तो नहीं है. We'll be having those chair car type of coaches only. अभी तो जितने पहले जो 75 coaches की बात हुई थी, in the last Independence Day our Prime Minister had announced, अभी तक तो उनका प्लान कोई स्लीपर टाइप का नहीं हुआ है, because that will need a lot of going back to the workbench and remodeling the whole coach from the sleeper point of view. At least अंदर से काफी ज्यादा हमें modification करना पड़ेगा, तो that will take some time. So maybe that is why अभी prefer किया जा रहा है कि we will proliferate this chair car type of train sets, है ना, to replace all the शताब्दीज, जो हमारी शताब्दीज चल रही हैं, उनको लोकोमोटिव हॉल्ट से शायद चेंज करके ट्रेन सेट बेस्ड कर देंगे, सो दैट हम इंटरसिटी कनेक्शन को बहुत फास्ट कर दें, हमारे इंटरसिटीज कनेक्शन बहुत फास्ट हो जाए, शताब्दी रूट्स पे या अदर इंपॉर्टेंट इंटरसिटीज को हम कनेक्ट कर पाए, है ना. And then maybe in the long run, maybe in the long run we can definitely we'll be shifting towards sleeper type of coaches. That is possible. Okay, so now we have this semi high speed train 18. इसमें क्या special है? What is special in this train set? From the electrical propulsion point of view, it has IGBT based energy efficient 3-phase propulsion system. ये क्या होता है? We'll talk about this. We have a separate lecture on this. I have a separate lecture on this, so I will talk about that. There are another thing that most of the propulsion equipment, they have been shifted to underslung. Propulsion equipments क्या होते हैं, मैं इस लेक्चर में मैं कवर नहीं करना चाहता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर है. हम जब इंट्रोडक्शन टू ट्रेन सेट, व्हेन आई विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू ट्रेन सेट एंड स्पेसिफिकली द propulsion system of train 18, I will talk about what is this line and traction converter, what is auxiliary converter and these things, battery charger. तो ये जो सब जो इक्विपमेंट है, इसको सबको हमने अंडरस्लंग कर दिया है. वी हैव पुट एवरीथिंग अंडरस्लंग, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स हैव बीन पुट अंडरस्लंग, and that is why this is these propulsion equipments, what they have done is they have made way for more seating capacity in the coach. तो जनरली EMU MEMU में जो मोटर कोचेस होते हैं, उनका आधा स्पेस तो HT कंपार्टमेंट में चला जाता है, but that is not the case in case of the train 18 which was made.
Okay, and these are bolsterless bogies. The bogies are bolsterless with fully suspended traction motors. With fully suspended bolsterless bogies with fully suspended traction motors. Okay, my question is, can someone tell me our coaches in ICF coaches also you must have studied there is a bolster. In LHB coaches we have a bolster. Why do we have a bolster? To Why isolate do we have a bolster? to isolate the trolley, the dynamic conditions from coach and distribute the load. To isolate the trolley dynamic condition from the coach car body. Okay, to distribute the load. Is it for that तो we have the secondary suspension, primary secondary suspension तो है हमारे पास उस चीज के लिए. Bolster क्यों है? To equally distribute the load, sir. To equally distribute the load. Yeah, this makes a little bit of sense. To equally distribute the load, we have provided the bolster. You see, the basic reason behind the bolster in a bogie is that if we have a bogie and we have to mount our coach car body over the bogie. Okay, we have to mount the coach over the bogie. So, in general, it is believed that if we do not have a bolster, so what will happen that our car body, our coach will start yawing. Yawing का मतलब समझ रहे हैं आप? What is yaw motion? ये फॉर एग्जांपल आपका कोच का कार बॉडी है और इसके नीचे ये आपका ट्रॉली है. दिस इज योर ट्रॉली. ओके, नाउ इफ देयर इज नो बोल्स्टर इट इज बिलीव्ड कि यॉइंग मोशन होगा. ये कोच थोड़ा इस तरफ स्वे कर जाएगा, कभी इस तरफ स्वे कर जाएगा. इट विल स्वे, इट विल यॉ लाइक दिस. सो दिस विल स्पेसिफिकली ऑन कर्व्स ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने कॉमन एक बोल्स्टर कनेक्शन दे रखा था. That is the design principle of bogie. Why a bolster is provided? To prevent the yawing of the car body in case of lateral movement or in case of curves and all these things. Okay. So in order to prevent this yawing, we provided the bolster. But I have written here, and even the ICF guys, they have manufactured a bolsterless bogie. Then kaise? How is it possible? To provide air suspension. In fact, let me tell you that the concept of bolster in bogies, it is an outdated concept now. If you look at any high-speed bogie, be it the European high-speed trains, be it the Chinese high-speed train, be it the bogie of a bullet train, they do not have any bogie. Any bolster. They do not have bolster at all. So how are we managing? ये yaw को कैसे manage कर रहे हैं? Through air You were saying suspension. something. Through air suspension. Through air suspension we are managing. So how air suspension से हम manage कर रहे हैं? Very good. That is to a great extent true. Not only there are two things here. When you go for a bolsterless bogie design, so thing number one, when you are going for a bolsterless bogie design, you cannot have coil spring suspension. You just cannot have it. Coil spring suspension, I hope everyone is aware, ये जो secondary spring को जो flexi coil spring होते थे LHB coach में, जो धीरे धीरे we are trying to phase out. We are trying to phase out the flexi coil suspension now. अब तो air suspension लगने लगा है. So this coil spring at the secondary stage, this needs to be removed. This needs to be removed, and this needs to be replaced with these kind of air suspension. With your air suspension. Okay. And the beauty of air suspension here is, air suspension system is that for ये जो spring है, इसका spring constant जो है, इसका spring constant क्या होता है? You have, what is the spring equation? Spring equation क्या होता है? Force is equal to spring constant multiplied by the displacement. Yeah, I hope सबको पता होगा. तो ये spring के लिए ये spring constant एक constant होता है, more or less. This constant, ठीक है? ये more or less constant रहता है. इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर फोर्स एक तरफ अगर यॉइंग हो रहा है, एक तरफ अगर फोर्स कोच का बढ़ गया तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज आपका स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट है स्प्रिंग के लिए. बट यहाँ पे जो एयर स्प्रिंग सस्पेंशन है, यहाँ पे एयर स्प्रिंग इज डिफरेंट हियर. एयर स्प्रिंग में ये ब्यूटी है कि दे हैव अ वेरिएबल स्प्रिंग कांस्टेंट. आप उन पे जितना ज्यादा लोड लगाएंगे उतना ज्यादा प्रेशराइज्ड एयर लेवलिंग वाल्व से इधर आएगा और आपका स्प्रिंग कांस्टेंट को एडजस्ट किया जाएगा इन सच अ मैनर so that the displacement is reduced. Matlab, in this case, if your force increases, the spring constant increases so as to keep the displacement constant.
okay, so as to keep the displacement constant. So that is why ये air spring suspension पहले आपके मेट्रो सॉरी ये आपके मुंबई लोकल में, बॉम्बे लोकल में, सबर्बन ट्रेन्स में, EMUs में इसको लगाया गया, so that वहां पे जो एक्सट्रीम लोडिंग होता है, सुपर डेंस क्रश लोड, पैसेंजर्स किसी एक तरफ कोच के एक साइड में ज्यादा खड़े हैं, कम खड़े हैं, तो वो सारे सिचुएशन से डील करने के लिए एक नॉर्मल स्प्रिंग लोडेड सेकेंडरी सस्पेंशन कैन नॉट डील विद इट, वो टूट जाएगा कुछ दिनों में, एंड दैट विल बिकम अ वेरी precarious situation, dangerous situation. That is why air spring suspension are provided. And similarly here also, in case of bolsterless bogies, if we have air spring suspension, we can have a bolsterless bogie. But only having an air spring suspension won't help. There is another thing which is required. What is it? I think all of us have studied bogie. We are mechanical department. Most of the participants are from the mechanical department. So what is that extra thing which we require? Dampers, yaw damper. Very good, very good. Correct. Yaw dampers. So finally, not सिर्फ air suspension देने से काम चलेगा नहीं, आपको yaw damper देना पड़ेगा, so that अगर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ी instability अगर आ भी जाती है, that yaw damper completely damps that effect. और आपको लगेगा कि हुआ ही नहीं, आपको लगेगा कि yaw हुआ ही नहीं, ठीक है? So a combination of air spring suspension and a well-designed yaw damper is enough to remove a bolster and to make a bolsterless bogie, which the ICF studied and they have tested, trial, and they did everything, and that is why they went for a bolsterless bogie, which is the case with most of the high-speed trains. And having a bolsterless bogie, the biggest advantage of having a bolsterless bogie is that we can hang most of our components under slung, क्योंकि bolster काफी ज्यादा जगह ले लेता है. अगर bolster आपने हटा दिया तो ये जो मैं लिखा हूं ये underslung components, you can hang it underslung and you get a lot of space. Okay. So and this train 18 is 50% powered. It is 50% powered. इसका मतलब क्या हुआ? What is the meaning of 50% powering? Some of the 50% of the axles will be connected to the motors. 50% of the axles are connected to the traction motor. Very good, very good. So how many axles are there in a train 18? Anyone? Acha, how many coaches are there in train 18? 18 into 4, sir. 64 axles, No, sir. it's not 18, it is 16. 64 axles, sir. 16 coaches and 64 axles. Correct, correct. 16 coaches, 64 axles. So 64 में से 32 axles में आपके traction motor लगे हैं, ठीक है? Is it clear? 32 motors have traction motors. And if you have a calculator on your phone or if you have a calculator nearby, if I tell you that the maximum rating of the traction motor, power rating of the traction motor, power output of the traction motor is 250 kilowatt, can you multiply 32 with 250? What is the figure which you are getting? 32 multiplied by 250 कितना है? कितना होता है? 8,000, sir. Sorry? 8,000. 8,000. Yes. 8,000. इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1.34 के साथ, तो कितना आ रहा है? Multiply 8,000 whatever you are getting into 1.34. How much are you getting? 10,720. Huh? 10,000. 10,720. 10,720. So this value, this is the maximum, this is the horsepower rating of the train 18. ठीक है? 10,000 हॉर्स पावर, ये लगभग 10,500 HP का आपका ट्रेन 18 का जो हम पावर की बात करते हैं ना, कोई नया लोकोमोटिव आता है, हम बोलते हैं पहले 3,000 HP, 4,000 HP, 5,500 HP, 6,000 HP, अब तो 12,000 HP भी आ गया. बट द ट्रेन 18 का अगर कोई आपसे पूछे कितना HP का है, व्हाट विल बी योर आंसर? इट विल बी 10,000 HP. कैसे कैलकुलेट किया? आपने खुद ही कैलकुलेट किया, मैंने नहीं किया. I just gave you the number of powered axles. I just gave you the individual power rating of one traction motor, and you yourself have calculated. So 10,000 HP it is, and it is greater than most of the locomotives currently in Indian Railways fleet. है कि नहीं? Yes or no? It is. So now train set अब semi high speed हो गया. अब high speed train set तो आया नहीं है, इसीलिए ट्रैक अभी खाली है इस इमेज में. बट जब आएगा तब हम देखेंगे. But high speed rail, what is the definition of high speed rail?
Anyone? It is written in the slide. Ethernet, sir. Sorry? 200. Greater than If existing track, आपके जो existing track में जो हमारा ऑलरेडी ट्रैक बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसी में आप माइनर मॉडिफिकेशन करके अगर उसी पे 200 की एमपीएच से ऊपर ट्रेन चला लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड हाई स्पीड ऑपरेशन. और आप अगर नया ट्रैक बना रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग अ ब्रांड न्यू ट्रैक, एलिवेटेड कॉरिडोर हो, स्लैब ट्रैक हो, जैसा भी आप पूरा ब्रांड न्यू बना रहे हैं और उसमें आपका टॉप स्पीड 250 के एमपीएच से अबव आ रहा है, दैट इज कॉल्ड हाई स्पीड रेल ऑपरेशन. This is the UIC definition, है ना? UIC definition of high speed. So currently we do not fit anywhere. हमारे पास कोई भी ट्रेन नहीं है. इसको फिट होने के लिए मे भी कुछ सालों में होगा. Okay. Any questions? Any doubt up to this point? Hello. No sir, clear sir. Okay. फिर से रीजनरेटिव ब्रेकिंग थोड़ा सा रिपीट कर देंगे सर. रीजनरेटिव ब्रेकिंग रोटेट. अच्छा ठीक है. मिस्टर हरेंद्र. ओके. अच्छा मिस्टर हरेंद्र, ये बताइए एक मोटर क्या काम करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मोटर? अगर ये एक मोटर है मान लीजिए, ठीक है, मोटर का क्या काम होता है जो हम 10वीं कक्षा में हम पढ़े थे? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. राइट. तो मोटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने सप्लाई दिया और मैकेनिकल एनर्जी आपने आउटपुट ले लिया. ठीक है. अब जनरली ये मैकेनिकल एनर्जी इट इज इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन. हर मोटर जो हम देखते हैं तो कुछ गोल गोल ही घूम रहा होता है. तो ट्रैक्शन मोटर में भी कुछ गोल गोल घूम रहा है, जिस वजह से आपका चक्का गोल गोल घूम रहा है. ठीक है. एज सिंपल एज दैट. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा क्या? someone's microphone is still on. So electrical energy is converted to mechanical energy. That is the function of a motor. अच्छा, मोटर का ऑपोजिट क्या होता है? जनरेटर या अल्टरनेटर. हाँ, जनरेटर. ये क्या करता है? Converts mechanical energy into electrical energy. It converts mechanical energy into electrical energy. ठीक है. चलिए, ये समझना बड़ा आसान हो गया. अब आपका जो ट्रैक्शन मोटर है, ट्रैक्शन मोटर है या जनरेटर है? क्या है वो? वेरी सिंपल क्वेश्चन. ट्रैक्शन मोटर है कि जनरेटर है? ट्रैक्शन मोटर है. तो नॉर्मल मोटरिंग फेज में ट्रैक्शन मोटर, जब नॉर्मल मोटर चलता है, आप उसको बिजली, उसको थ्री फेज ट्रैक्शन मोटर लगता है, तो आप उसको 3 फेज सप्लाई देते हैं और वो मोटर में फिर वो गोल टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो गोल गोल घूमता है, आपको एक्सेल को घुमाता है, आपका व्हील घूम जाता है, आपको ट्रैक्टिव इफेक्ट मिल जाता है, स्पीड मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है, सब मिल जाता है. ओके. सो दिस इज नॉर्मल मोटरिंग ऑपरेशन. बट जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलता है, तो हम व्हाट वी डू इज कि हम लोग इस ट्रैक्शन मोटर को एक जनरेटर बना देते हैं. व्हाट वी आर डूइंग इज वी कन्वर्ट दिस ट्रैक्शन मोटर इनटू अ जनरेटर. ठीक है. ट्रैक्शन मोटर को हम जनरेटर बना देते हैं. तो इसमें क्या होने लगता है कि जो आपका फ्लो है वो उल्टा हो जाता है. अब आपका जो व्हील है, इट वाज रोटेटिंग. मान लीजिए आप 100 kmph पे चल रहे हैं और रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमने अप्लाई किया, तो आपका ट्रैक्शन मोटर को जब रीजनरेटिव ब्रेक अप्लाई होता है, उसको टेम्परेरीली एक ऑल्टरनेटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो वो क्या करता है, आपके जो रोटेशनल एनर्जी है, जो आपका एक्सेल रोटेट कर रहा है, वो उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी उल्टा बनाने लगता है. उसको यूज करके, उस एनर्जी को यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगता है. 3 फेज एसी वापस उल्टा बनाने लगता है. ठीक है. एंड वंस सिंस इट इज यूजिंग योर मैकेनिकल एनर्जी, तो इट इज टाइप ऑफ इट इज कंज्यूमिंग एन एनर्जी. तो आपकी स्पीड कम होने लगती है, बिकॉज यहाँ पे कोई एनर्जी बन रहा है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से आपका मैकेनिकल एनर्जी कम होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपका बढ़ता जाएगा जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ जब मैकेनिकल एनर्जी कम होगा, इसका मतलब आपका स्पीड भी कम होगा, आपका एक्सेलरेशन कम होगा. इसका मतलब आप पे ब्रेक लग रहा है, आप पे ब्रेक लगाया जा रहा है. बिना ब्रेक लगाए, बिना आपके चक्कों पे ब्रेक लगाए, आप पे ब्रेक लगाया जा रहा है. इलेक्ट्रिकली आप पे ब्रेक लगाया जा रहा है. दैट इज कॉल्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग. उसमें हम क्या करते हैं, मोटर को जनरेटर ऑल्टरनेटर बना देते हैं टेम्परेरीली, so that it converts the rotary energy of the axle to electricity which is fed back to the OHE.
वो OHE को वापस सप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं? तो इसमें ये प्रोसेस कैसे होता है साहब? हैं, सॉरी, ये प्रोसेस जो आप इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हो रहा है, वो प्रोसेस कैसे होता है? ये समझ गया कि ये जनरेटर अल्टरनेटेड बन जाता है, लेकिन कैसा है, स्टेप वाइज कैसा जाता है सर? स्टेप वाइज इसमें ऐसे जाता है कि इसमें आई विल टॉक अबाउट दिस इन द प्रोपल्शन सिस्टम। ओके, इस लेक्चर में भी जाएंगे तो इस लेक्चर में हम खत्म नहीं कर पाएंगे। उसमें रीजनरेटिव मोड में एग्जैक्टली सबसे पहले मैं आपको मोटरिंग मोड बताऊंगा, आई विल टेल यू द मोटरिंग मोड। फिर रीजनरेटिव मोड में क्या उसमें क्या स्विचिंग किया जाता है, देन आई विल टेल यू देयर, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये सडनली जनरेटर कैसे बन जाता है। लेकिन मैं आपको, चलिए आपको थोड़ा डाउट है, थोड़ा बहुत टाइम है, मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ। एसी ट्रैक्शन मोटर अगर आपने पढ़ा होगा तो हैव यू हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द ट्रैक्शन मोटर? यस सर, यस सर। सिंक्रोनस स्पीड। और एक सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड? देखिए यही चीज है जो काफी लोगों को नहीं पता होगा। It's the speed in which the flux is rotating. Speed is working at 3000 RPM and there is a no slip. No, synchronous rotor, there is a 120 F by P, 120 into frequency by 120 F by P। ठीक है, आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, आपके एसी ट्रैक्शन मोटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेस करने के लिए आपका रोटर उसको चेस करता है और उस वजह से वो भी रोटेट करता है और आपका नॉर्मल मोटरिंग होता है एसी ट्रैक्शन मोटर में। ठीक है, तो एक तो मोटर के जो रोटर का आरपीएम होता है उसको n लिखते हैं, और सिंक्रोनस स्पीड इज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड। ओके, इन दोनों में कौन सी चीज ज्यादा होती है, विच इज ग्रेटर इन जनरल? रोटेटिंग मैग्नेटिक स्पीड का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ग्रेटर देन, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर, और हमेशा ग्रेटर रहना भी चाहिए। हाँ, दिस सिंक्रोनस स्पीड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन n। अगर वो स्पीड ग्रेटर नहीं रहेगा तो फिर आपका वो एसी ट्रैक्शन मोटर फिर वो ट्रैक्शन ही नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा ग्रेटर रहता है, जब तक ये ग्रेटर रहता है तब तक आपका मोटरिंग चलता रहता है। लेकिन जब आपको इसको एज ऑल्टरनेटर कन्वर्ट करना है, आपका इस ns पे तो कंट्रोल है। What is the equation of ns which you told me? Someone told me 120 F by P, किसने बोला था? हाँ, if I reduce if I reduce the frequency, ns कम होगा कि नहीं होगा? Yes. कम हो जाएगा, और मैं उसको इतना कम कर दूंगा so that temporarily ns becomes less than n. When the synchronous speed less than the rotating, कम हो जाएगा। हाँ, जब सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाएगा आपके एक्सेल की स्पीड आरपीएम से, तब उस केस में ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग होने लगेगा। ऑटोमेटिकली आपका स्लिप उल्टा चला गया, नेगेटिव स्लिप रीजन में जब चला जाएगा तब आपका ऑटोमेटिकली रिटार्डिंग फोर्स लगने लगेगा, है ना? आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा और आपका उल्टा फिनोमेना होने लगेगा। ठीक है, ये है अंडरलाइंग प्रिंसिपल कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, ये है। जिसको नहीं समझ आया, नो प्रॉब्लम, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन अनदर लेक्चर, प्रोपल्शन सिस्टम, उसमें और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, सो नाउ द रोलिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। ये जो मैंने रिक्वायरमेंट लिखे हैं, ये मैंने अपने मन से बना के नहीं लिखा है, आई हैव जस्ट रिटन की यूरोपियन स्टैंडर्ड्स यूआईसी है ना, इंटरनेशनल रेलवेज की जो फेडरेशन है यूआईसी, इन्होंने बताया कि अगर आपको हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक बनाना है या ट्रेन सेट के हिसाब से हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक बनाना है, तो क्या क्या उसमें होना चाहिए, फीचर्स होने चाहिए आपके रोलिंग स्टॉक में। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इट शुड बी सेल्फ प्रोपेल्ड, it should have a fixed composition, and it should be bidirectional. Okay, it should be bidirectional. My question is, क्या हमारे जो रोलिंग स्टॉक हम चला रहे हैं आजकल इंडियन रेलवेज में, ये तीनों में से किसी चीज को फॉलो करते हैं? तो बहुत चीज नहीं, कहाँ सेल्फ प्रोपेल्ड है? आपका राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से हावड़ा जाता है, क्या वो सेल्फ प्रोपेल्ड है? ना मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब समझ रहे हैं ना कि आपका जो इंस्पेक्शन कार्ड होता है बहुत, हाँ, वो इंस्पेक्शन कार्ड छोड़ दीजिए, दैट इज नॉट अ हाई स्पीडर। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल ट्रेन जो आपके 22 कोच का 24 कोच का रेक है, वो फुल्ली सेल्फ प्रोपेल्ड होना चाहिए। नहीं है, वो नहीं है। आपका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, आपको जब मर्जी, आपको जब मन करता है, आपको पीओएचडीयू हो गया, आईओएचडीयू हो गया, कोच काट लो, दूसरी हो गया, दूसरा लगा दो, तो आपका कॉम्पोजिशन भी फिक्स नहीं है। योर कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड।
आपका आपका जो ट्रेन है क्या बाई डायरेक्शन मूव कर सकता है विदाउट अ लोको रिवर्सल? बाई डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा यूज में मुंबई राजधानी में 2 लोकोमोटिव। डबल हेडेड, ठीक है, आपने एंड टू एंड डबल हेडेड आपने लोको लगा दिया, बट 2 लोको लगाने का सिर्फ ठीक है, वो एक्सपेंडिचर भी उस हिसाब से होता है, बट इन जनरल बाकी ट्रेन के लिए बाई डायरेक्शनल भी नहीं है आपका रोलिंग स्टॉक। तो हम तो पहले ही क्राइटेरिया में फेल हो गए, वी हैव फेल्ड इन द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया कि वी डू नॉट हैव अ हाई स्पीड। अगर हमें हाई स्पीड या सेमी हाई स्पीड ऑपरेशन करना है, हमारा रोलिंग स्टॉक क्वालिफाई नहीं कर सकता, ना सेल्फ प्रोपेल्ड है, ना फिक्स कंपोजिशन है, ना बाई डायरेक्शनल है, आपको लोको रिवर्सल करना पड़ता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, जो ट्रेन 18 है वो बाई डायरेक्शनल है, ट्रेन सेट है बाई डायरेक्शनल होता है, ईएमयू आपके बाई डायरेक्शनल होते हैं, मेमू आपके बाई डायरेक्शनल होते हैं, है ना। उनका मोर और लेस कंपोजिशन फिक्स होता है, कभी कभी रिक्वायरमेंट हो तो चेंज करना पड़ता है, बट मोर और लेस फिक्स कंपोजिशन होता है, और वो सेल्फ प्रोपेल्ड भी होते हैं। तो दैट मींस कि कॉन्सेंट्रेटेड पावर रोलिंग स्टॉक आप चला ही नहीं सकते, मतलब वो क्वालिफाई नहीं करता है उस कंडीशन में, ठीक है। देन हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो बड़ा वेग सा टर्म है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी हाई लेवल ही रहेगा। लिमिटेड एक्सल लोड, द एक्सल लोड शुड बी लिमिटेड टू 11 to 17 टन। आपका एक्सल लोड जो है वो लिमिटेड रहना चाहिए, 11 से 17 टन के बीच। एक्सल लोड शुड नॉट बी वेरी हाई, ओके। व्हेन यू आर गोइंग फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, एक्सल लोड कम रहेगा तो आपको ज्यादा स्पीड मिल पाएगा, और प्रॉब्लम ये है कि एट ग्रेटर स्पीड्स greater axle load, मतलब greater weight of the train is detrimental for the train overall, because that will create a great amount of vertical force impact on the track पे बहुत ज्यादा vertical force आएगा, dynamic force आएगा। Similarly lateral force भी जो track पे आएगा बहुत ज्यादा आएगा high speed पे, अगर आपका weight बहुत ज्यादा है, axle load अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो track point of view से अच्छा नहीं होता, इसीलिए 11 से 17 टन के बीच में आपको axle load को लिमिट करना पड़ेगा, ठीक है। You need a good amount of tractive power, okay. We need a good amount of tractive power. वैसे यहाँ लिखा है 11 to 24 किलोवाट पर टन, आपको ट्रैक्टिव पावर चाहिए। Then 3-phase propulsion system is required. What is 3-phase propulsion system? That we will discuss in another lecture. We need IGBT based control circuits. This also we will discuss. ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक सिस्टम आपको चाहिए, ऑप्टिमाइज एरोडायनेमिक शेप चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन कैप सिग्नलिंग चाहिए। हाई स्पीड में 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर अगर आप ट्रेन चलाते हैं तो आपकी कैप सिग्नलिंग होनी चाहिए। यू कैन नॉट, आप मल्टीपल एस्पेक्ट जो सिग्नलिंग हमारी है, जो बाहर एस्पेक्ट देख के हम लोग गेज करता है हमारा लोको पायलट, वो नहीं चलेगा, दैट विल जस्ट नॉट वर्क, वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। आपको इन कैप सिग्नलिंग चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकिंग सिस्टम्स चाहिए जिसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग। Sir, once explain about in-cab signaling system. Sorry? Sir, once explain about in-cab signaling system. What is in-cab signaling system? In cab signaling system, in-cab signaling system, I'm not an expert in cab signaling, but the thing is that the aspect of your signal, कि सिग्नल आगे रेड है, डबल येलो है, ग्रीन है, वो सिग्नल डायरेक्टली आपके लोकोमोटिव में कन्वे होके आ जाएगा। That will directly come into a locomotive. Your loco pilot need not see outside कि क्या सिग्नल है, वो लोकोमोटिव में अपने आप कैप सिग्नल अपने आप कन्वे होके आ जाएगा। That may come through, उसमें बहुत तरीके हैं। It may come through the track circuiting. ट्रैक सर्किटिंग के थ्रू एक पर्टिकुलर आप रेंज में अगर आ जाएंगे सिग्नल से, तो थ्रू द ट्रैक सर्किटिंग दैट इंफॉर्मेशन में बी कन्वर्ट टू लोकोमोटिव, और दैट में बी कन्वर्ट थ्रू जीपीआरएस बेस्ड और सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम। एक जीपीआरएस या सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम के थ्रू आपको सिग्नल कन्वे हो सकता है, ठीक है। ये सारे आपके तरीके हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो में आप देखेंगे दे ऑल हैव इन कैप सिग्नलिंग, ऑल्दो उनका स्पीड तो बहुत कम रहता है, 60 kmph तक रहता है, बट दे ऑल हैव इन कैप सिग्नलिंग, और अपने आप सिग्नल के बेसिस पे आपका जो ट्रैक्शन है वो अपने आप कंट्रोल हो सकता है, ओके। मतलब फॉर एग्जांपल आपके लोकोमोटिव में अपने आप पता, जब सिग्नल आ जाएगा कि अब येलो सिग्नल है आगे, तो अपने आप आपका स्पीड डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके लोको पायलट को कुछ मतलब मास्टर कंट्रोलर को डाउन भी करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप स्पीड रिड्यूस हो सकता है। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशंस, ओके। ये अगेन एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट द कॉन्सेप्ट इज कि इन कैप सिग्नलिंग में द सिग्नल व्हिच इज देयर, जो अभी हम लोग सिग्नल पोस्ट से देख के स्टडी कर पढ़ के फिर वो डिसाइड करता है लोको पायलट या एएलपी,
वो नहीं होगा. The signal will be directly coming into your the driver desk, and accordingly all the it will be connected to the tractive effort which is being produced automatically, है ना. Then airtight structure होना चाहिए. This is another very important point for rolling stock. Train set आप अगर बनाएं या high speed train set बनाएं तो ये important है. Okay. Okay, just I'll just 1 minute break I'm taking. Just I'm getting a call, please. Okay, hello. Am I audible now? Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So Yes, sir. continue. Continue. Let's continue. Acha, another very important thing, modification. When someone's microphone is on, please microphone off kar lijiye. Mr. Pankaj Kumar, I think your microphone is on, Mr. Pankaj. Okay. So एक important modification आपको wheel level पे जो करने की जरूरत है rolling stock में, वो है कि we need to have flatter treads. व्हील कोनिसिटी जो है, व्हील कोनिसिटी को हमें कम करने की जरूरत है. What is the tread conicity currently which we are having for our rolling stock? 20. 1:20. 1:20. 1:20. Okay, 1:20. Now I have written that we need to reduce it further to 1:40, 1:60. ऐसा क्यों लिखा है मैंने? Rail wheel contact area should be less because. नहीं. Should be more, sir. रेल व्हील कॉन्टैक्ट एरिया से रिलेटेड नहीं है. It is something else. Taper provided. Sir, to have greater adhesion. To have better adhesion. To have no, that is not the answer. I guess the reason is because since high-speed trains move in a straight track, they don't need to curve. So flatter tread helps in that. Flatter tread helps in that. Okay. High-speed train move on a flat track. But okay, देवत्र वो तो ठीक है. मानना high-speed train ज़्यादातर track straight रहेगा. But flatter tread रहने से हमें advantage क्या मिलेगा? Comparatively पूरा flat तो नहीं रख सकते. But थोड़ा सा और flatten करेंगे उससे advantage क्या मिलेगा? Sir, stability. What kind of stability? अरे, you are right, but एक specific what kind? In what direction stability will be there? Lateral, sir. हाँ, very good. Lateral. है ना? तो lateral The sinusoidal motion on the track will be less, sir. Correct, absolutely correct. Now सबसे पहले ये इसका हिस्ट्री आपको पता होगा कि हमने ये टेपर दिया ही क्यों है. Why have we provided the taper in the first place? Anyone? No, to increase the wheel life. For differential action to negotiate curves. Okay, done. So now, but इसका एक drawback है. There is a drawback that by providing the taper, we are creating hunting oscillations. है ना? Straight हमारे ट्रेन को जाना straight चाहिए, but जब वो जाता है, there are some hunting oscillation as a result of which our train moves like this. Of course, it is not that prominent as this, but I am just giving you an idea. So these are called parasitic motions, जो हमारे ट्रेन के ट्रैक्टिव एफर्ट की एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं across a perpendicular axis, which we do not require, of course. We do not require these kind of parasitic motions. इसको हमें कम करना है. अच्छा, जब हाई स्पीड में आप जाते हैं, it has been experimentally proven that when you start going over a speed of 200 kmph, ये इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, है ना? These parasitic motions becomes more and more prominent
ठीक है, तो एंड दैट कैन लीड टू डिरेलमेंट एंड सीवियर एक्सीडेंट्स। तो इसीलिए in order to prevent this lateral hunting oscillation, we should go for slightly flatter wheel conicity, है ना, flatter treads, है ना। अगर हमें हाई स्पीड में जाना है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर जाना है, तो हमें फ्लैट करना पड़ेगा, वरना मुश्किल होगा थोड़ा। दैट विल बी मतलब पैसेंजर कंफर्ट विल गेट अफेक्टेड, so that we'll do, that we have to do. So my question is कि यहाँ पे फिर we are compromising with our curve negotiating capability, yes or no? Yes. So how to compensate for that? How do we compensate for that? Trade, sir, that means flatter trade area will be more, I think. No, the area, no, it's not. देखिए, आपने ट्रेड को फ्लैट कर दिया, आपने ट्रेड को कोनिसिटी दिया ही इसलिए था, the purpose was to negotiate curve to get the differential action, okay? But now you have made it a little flatter. So once you have made it a little more flat, so your curve negotiating capability जो है वो थोड़ा सा weaken हो गया, थोड़ा कम हो गया, poor हो गया। उसको compensate करने के लिए आपको क्या mechanism देना पड़ेगा? Any idea? Something to compensate. So if I remove axle, if you want to remove the axle, so you want articulated bogie, है ना, axle ही remove कर दो। Okay, ठीक है, very good. आपने हाँ नहीं आप removal on to curve side. ट्रैक में चेंज कर, ओके, ट्रैक में आपको कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू डू इज, वी ऑल नो दैट वी हैव एयर स्प्रिंग सस्पेंशन, हमारे बोगीज में एयर स्प्रिंग सस्पेंशन होता है, वी हैव एयर स्प्रिंग सस्पेंशन। सो दिस एयर स्प्रिंग सस्पेंशन, दे नीड टू बी tilting type of air spring suspension mechanism we require, है ना। बेसिकली वी नीड टिल्टिंग ट्रेन्स। टिल्टिंग ट्रेन्स के बारे में सुना है किसी ने? नहीं सुना, चलिए आगे बताएंगे। Sir, on curve, more biting force will be there, so tilt should be there while curve negotiation. नहीं, because आपने कभी अगर आपने बाइक चलाया हो या बाइक रेसर्स को देखा हो, तो कर्व पे वो लोग बेंड होते हैं कि नहीं, टुवर्ड्स द साइड ऑफ द टर्न, यस और नो? हाँ क्यों होते हैं? बिकॉज टू प्रोवाइड दैट स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स, है ना, वो स्टेबिलिटी रहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बहुत सारे रीजंस हैं। तो वो जो हमने थोड़ा सा जो टेपर को कम कर देंगे, तो उसको काउंटर ऑफ करने के लिए आपको टिल्टिंग मैकेनिज्म देना पड़ेगा अपने कोचेस में, अपने कार्बोडी और ये कनेक्शन के बीच में, कार्बोडी बोगी कनेक्शन के बीच में टिल्टिंग मैकेनिज्म देना पड़ेगा, सो दैट टू काउंटरैक्ट दैट इफेक्ट, ओके। तो सो दैट पैसेंजर कंफर्ट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, ओके। एंड ओके, नाउ सस्पेंशन में भी आपको ट्रेन सेट बनाना है, हाई स्पीड ट्रेन सेट बनाना है, तो सस्पेंशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे देखिए कोई ये दिस इज आई थिंक फॉर द बुलेट ट्रेन बोगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज नो बोल्स्टर, यहाँ तो सीधे एयर स्पीड सस्पेंशन है, देयर इज नो बोल्स्टर हियर, ठीक है। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोल्स्टर विद योर डैम्पर आप प्रोवाइड कर देंगे, यू प्रोवाइड अ बोल्स्टर विद योर डैम्पर, sorry, air spring suspension with your damper, and you are good to go. आप हाई स्पीड पे ऑपरेट कर सकते हैं बोगी पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, फ्रॉम द बोगी पॉइंट ऑफ व्यू। अनदर थिंग सस्पेंशन सिस्टम में जो आपको देने की एक इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है, यू नीड दिस काइंड ऑफ एन इंटर कार डैम्पर्स। व्हाट इज दिस इंटर कार डैम्पर्स? ये इमेज देख के कुछ समझ आ रहा है? इंटर कार डैम्पर, इन बिटवीन टू कोच, करेक्ट। देखिए कोच टू कोच, अगर आप, हमारा जो आईसीएफ कोच था, है ना, हमारा आईसीएफ कोच में कोच टू कोच एक तो स्क्रू कपलिंग था और दो साइड में क्या था, स्क्रू कपलिंग के साथ बफर्स थे, ठीक है। तो उसमें काफी कभी जर्क नहीं लगता था, काफी उस हिसाब से काफी ठीक लगता था, मतलब इट वाज ऑल स्मूथ, ठीक है। नाउ सिंस वी हैव बफरलेस टाइप ऑफ कपलर्स, इसमें बफिंग एक्शन तो कपलर ही करता है, तो बट देयर विल ऑलवेज बी सम पॉसिबिलिटी और चांसेस ऑफ सर्टेन जर्क्स, ओके। तो वैसे केसेस के लिए कि जर्क्स ना लगे,
है ना। और क्योंकि हमारे अब कोच के बीच में इंटर कोच डिस्टेंस हम कम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रिड्यूस द इंटर कोच डिस्टेंस टू प्रिवेंट द एयर वोर्टिसेस, तो इस तरीके के इंटर कार हमें डैम्पर्स देने पड़ेंगे। ओके, जिस वजह से कोच के बीच में आपसी किसी तरीके का रेजिस्टेंस या किसी तरीके का जर्क ना आए। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज मोर, यू कैन इमेजिन इट मोर लाइक अ बफर। ठीक है, बफर की तरह हो सकता है, इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक व्हिच आई फाउंड, ठीक है, इवन आई वाज नॉट अवेयर दैट अगर आप एक टिपिकल ट्रेन पे एरोडायनेमिक ड्रैग लग रहा है, उसका अगर प्लॉट निकालेंगे, एक रिसर्च पेपर से मैंने निकाला है, you will see that the aerodynamic drag due to surface friction from side and roof, the percentage is around 27%, whereas maximum amount, almost 50%, close to half of your drag is being created by the bogie and the wheels. Can you believe this? क्या आप इस पे विश्वास या ये फैक्ट देख के आपको लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ये दो फिगर को ऐड कर दें, 45 plus 27, तो it will get close to 70% of your air drag is either due to the bogie and the wheels or due to your surface friction from the your surface, car body surface. तो इन दोनों पे हमें वर्क करने की जरूरत है. We need to badly work on these. और उस पे कैसे वर्क करेंगे? This kind of a design. This is the E5 series Shinkansen which you will get from Japan. यहाँ पे देखिए, जो आपका मैंने पिछले स्लाइड में बोला था कि बोगी और व्हील्स की वजह से एरोडायनेमिक ड्रैग कॉज होता है, यहाँ पे देखिए आपको बोगी और व्हील दिख रहा है. इज इट विजिबल? आर यू एबल टू सी द बोगी और द व्हील? No, you are not able to see. So what we have done, we have something called as a bogie side cover or a bogie skirting to cover the bogie. तो यहाँ पे काफी ज्यादा एयर यहाँ पे ट्रैप होके वो वोटेक्स बनता था, जिस वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता था, काफी एरोडायनेमिक ड्रैग फ्रिक्शन होता था. वो हमने कम कर दिया. आपको याद दिला दूं, वो पहले एक मैंने ग्राफ दिखाया था जिसमें एक्सपोनेंशियली हमें पता चला था कि एट हायर स्पीड्स, है ना, एरोडायनेमिक ड्रैग इज द मेजर रेजिस्टेंस एट हायर स्पीड्स. तो वो हम उस पे हमें कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है. तो ये हमने देखिए यहाँ कम कर दिया ड्रैग. आपके इंटर कोच गैप को हमने कम कर दिया, ऑलमोस्ट सील कर दिया. कोच टू कोच के बीच में ऑलमोस्ट ना के बराबर गैप रहना चाहिए. तो यहाँ पे भी किसी तरीके का गैप नहीं रहेगा, तो फ्रिक्शन नहीं होगा. ठीक है. So these are the things which we need to control, which we need to consider. Or similarly, the design of the nose cone. We see the Japanese with their subsequent series, जैसे जैसे उनके series advance होते गए, they have gone for a much more sharper nose, sharper nose cone के लिए गए. This was the first series, and आज के latest series में देखेंगे तो your extend होता जा रहा है. They are gone for sharper nose, of course, for these reasons only, to negotiate aerodynamic drag. Okay. And I have already mentioned about the tunnel boom. ये वहीं पे यहाँ पे वही लिखा है कि when a high speed train exits a tunnel, a blasting sound comes. Enter करने पे भी आता है, exit करने पे भी आता है. तो इसको reduce करने के लिए we need the sharper nose. What else do we need? ये जो gap है between the two coaches, जो gangway जिससे हम लोग gangway से जाते हैं एक कोच से अलग, हमारा gangway generally exposed रहता है, open रहता है. There is a gap. It should not be there. This should be covered. We need fully sealed gangways. And in Train 18, we have provided fully sealed gangways. I will tell you about that in the lecture on Train 18. We have provided fully sealed gangways. तो यहाँ पे aerodynamic drag हमने काफी कम कर दिया. And here you can see those intervehicular couplers which I was talking about, intervehicular dampers. It has been provided here in the bullet train. Okay. And there are this is again something related to the high speed bullet train. उसके कार बॉडी डिजाइन के ऊपर है. I'll just skip this slide. I'll share the slide with you. आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं. But there are many things which needs to be taken care of जब हम high speed train set बना रहे हैं. Mechanical design point of view से, we need to cover our bogies. We need to cover our intercoach connections. We need to cover even the pantograph. ये पैंटोग्राफ भी जो है एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ, ये पैंटोग्राफ की वजह से एयर रेजिस्टेंस होता है, नॉइज प्रोड्यूस होता है, एरोडायनेमिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. उसको कवर, उसको भी किसी तरीके से हमें स्ट्रीमलाइन करना है. ठीक है. एंड दीज काइंड ऑफ इंसुलेशन पैनल्स कैन बी प्रोवाइडेड. दिस इज ऑफ कोर्स नॉट ऑफ इंडियन रेलवे, दिस इज अगेन ऑफ द बुलेट ट्रेन. ओके. एंड पैसेंजर कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो हमारे सस्पेंशन सिस्टम है, दे आर पैसिव सस्पेंशन. द टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम व्हिच वी आर यूजिंग, दे आर passive in nature. ठीक है. They are not robust. They do not have a closed loop control system.
कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता उसमें, एक बार बना दिया तो बना दिया. But we need active suspension system like the one which is being used in most of the high-speed train sets nowadays, be it the Japanese, be it the Europeans, be it the Chinese. They have an active active suspension system and electrical actuator जो आपके वाइब्रेशन को स्टडी करके आपके कार बॉडी को स्टेबलाइज करता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वाइब्रेशन सिग्नल. इससे होता ये है कि आपके ओवरऑल कार बॉडी वो मोर और लेस स्टेबल रहता है. आपको ज्यादा एज अ पैसेंजर आपको कंफर्ट बहुत ज्यादा फील होती है. ट्रेन कर्व से नेगोशिएट कर रही हो या बहुत थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस हो, दैट विल नॉट बी कम्युनिकेटेड टू यू. Another important concept here is the use of articulated bogies like this. Use of articulated bogies. ये दोनों में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, नॉन आर्टिकुलेटेड और आर्टिकुलेटेड बोगीज में? डू यू सी एनी डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस व्हिच यू आर ऑब्जर्विंग? Bodies in all the same. Sir, articulated cars bogies are shared between two coaches, and other one is the separate bogies are there for individual. तो यहाँ पे देखिए ना, आपका दो कोचेस का सेम एक मतलब बोगी हो गया, एक सेम बोगी है दोनों कोचेस का मिला के. तो ओवरऑल आप देखेंगे नंबर ऑफ बोगीज आपके ओवरऑल कम हो जाएंगे. उस हिसाब से देखेंगे नंबर ऑफ बोगीज विल रिड्यूस. दैट इज ट्रू. बट द एक्सल लोड ऑफ द बोगी नीड्स टू बी इंक्रीज्ड बिकॉज नंबर ऑफ बोगी कम हो गया लेकिन लोड तो कम नहीं हुआ है, तो एक्सल लोड इसका ज्यादा हो जाएगा. ये एक ड्रॉबैक है. बट आर्टिकुलेटेड बोगीज वाले हाई स्पीड ट्रेन भी काफी चलते हैं. दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर. Okay, articulated bogies and car body tilting. जो मैं तब आपको बता रहा था, कार बॉडी टिल्टिंग मैकेनिज्म एक इस तरीके का मैकेनिज्म होता है कि कर्व पे आप पूरे कार बॉडी को किस तरीके से टिल्ट किया जाए सो एज टू अवॉइड पैसेंजर डिस्कम्फर्ट. उसके भी बहुत तरीके के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, है ना. एंड दिस इज बेसिकली, दिस कैन बी डन थ्रू अ टिल्ट एक्चुएटर और दिस कैन बी डन थ्रू द एयर स्प्रिंग सस्पेंशन, कंप्यूटर कंट्रोल्ड एयर स्प्रिंग सस्पेंशन, जिसमें कंप्यूटर अपने आप से उसको पता, मतलब आपके सिस्टम जो है, जो मेन आपका टीसीएमएस है आपके ट्रेन सेट का, इट विल बी अवेयर कि अभी कितनी देर में कर्व आने वाला है. उसी हिसाब से इट विल एक्चुएट द एयर स्प्रिंग्स और एक तरफ के एयर स्प्रिंग्स को उसमें वो ज्यादा एयर फिलअप कर दे, तो एक साइड से राइज अप हो जाएगा आपका कुछ और दूसरे साइड से उतना ही रहेगा, तो एक तरीके से टिल्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. वो भी मैकेनिज्म है. दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म. But ये इस तरीके का tilt actuator mechanism का, I have just put an image. These kind of things are also there in most of the train sets, high-speed train sets. So overall, all in all, the advantages of train sets are many. We can have, we can have better acceleration and deceleration. One तो नहीं, but close to 0.8 meter per second square का acceleration deceleration हमें मिल सकता है. And that will eventually, आप अगर calculation करें, that will lead to significant saving in time, and we'll be able to cover larger distance in lesser amount of time. This is a kind of a basic simulation which was done by RDSO, which showed that Delhi से हावड़ा, दिल्ली से कोलकाता पहुंचने में अगर आप हाई स्पीड टाइप के ट्रेन सेट्स बनाएंगे तो आपको 3.5 घंटे का ओवरऑल फायदा होगा. ओके. एनर्जी एफिशिएंट, मोस्टली ड्यू टू द रीजनरेटिव ब्रेकिंग, mostly due to the 3-phase traction system which we are using. These are energy efficient system. इसमें energy comparatively कम consume होता है. Of course diesel powered भी अगर नहीं है तो उस हिसाब से भी देखें तो fossil fuel वाला energy, again this is a controversial topic because electrical energy which we are getting from state electricity board वो भी fossil fuel जला के use होता है. But at least we are not producing, we are not polluting the पॉइंट ऑफ यूज एरिया. पॉइंट ऑफ यूज एरिया जहां पे हम ट्रेन यूज कर रहे हैं, जहां पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. इट मे बी गेटिंग प्रोड्यूस्ड एट द सोर्स, बट स्टिल इसको एनर्जी एफिशिएंट हम बोल सकते हैं टू सम एक्सटेंट. एनहांस्ड सेफ्टी, इसमें ऑफ कोर्स ट्रेन सेट्स आर द सेफ्टी डेफिनेटली एनहांस्ड. व्हेन यू स्टार्ट डिजाइनिंग अ ट्रेन सेट, इसमें काफी ज्यादा आपको रिडंडेंसी रखना पड़ेगा. ट्रेन सेट डिजाइन में काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी आपको, इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी कोच टू कोच के बीच में आपको रखना पड़ेगा. तो आपको एज अ ड्राइवर केबिन में बैठ के आपको पीछे की कोच में क्या चल रहा है, कुछ इश्यू है, वो भी पता चल सकता है. दैट काइंड ऑफ अ थिंग ऑल्सो यू कैन सी. अभी के हमारे ट्रेन में ड्राइवर को कुछ नहीं पता कि पीछे रेक में क्या हो रहा है.
इवन गार्ड को भी कुछ नहीं पता कि बीच में रेक में क्या हो रहा है। मतलब अभी अगर बीच में अगर कुछ में आग भी लग जाती है, उसका भी इंफॉर्मेशन ड्राइवर तक नहीं पहुंचेगा अनलेस वो पीछे मुड़ के देखे या समहाउ समवन पॉइंट्स इट आउट। बट ट्रेन सेट में ऐसा नहीं होगा। ट्रेन सेट में we'll have these fires detection and suppression system which will convey this particular information to the driver and the guard. अपने आप कन्वे हो जाएगा, वो अलर्ट आ जाएगा और आप नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं। वो फायर प्रोपेगेट हो उससे पहले रोक के आप वेकेट करा सकते हैं। सो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ट्रेन सेट के इन कंपैरिजन टू द कॉन्सेंट्रेटेड पावर रोलिंग स्टॉक। Reduced maintenance, of course there will be lesser wear and tear of the track and the wheel. Regenerative braking की वजह से wheel life काफी ज्यादा बढ़ती है। I will tell you about regenerative braking. जो ट्रेन 18 है, ट्रेन 18 में दो टाइप की ब्रेकिंग होती है, एक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग और एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जिसको इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग या रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और you'll be surprised to know that the algos are defined in such a manner in the brake control unit that सबसे पहले अगर ब्रेकिंग लगाना है, अगर ब्रेक ड्राइवर ने ब्रेकिंग डिमांड किया है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग ही लगेगा। सबसे पहले ईडी ब्रेक ही लगेगा। और अगर हमारी ब्रेक रिक्वायरमेंट ईडी ब्रेक के कैपेसिटी से ज्यादा है, ईडी ब्रेक का एक मैक्सिमम लिमिट है, 94 किलो न्यूटन का एक मैक्सिमम लिमिट है पर मोटर कोच। अगर 94 किलो न्यूटन से ज्यादा का आपको रिटार्डिंग फोर्स चाहिए, तब उसका एक्स्ट्रा फोर्स आपको जो न्यूमेटिक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक है उससे दिया जाएगा। द बैलेंस force will be given by the electropneumatic one. Okay, so it is a kind of a blended braking, but the priority is always given to ED brake. Priority ED brake को दिया जाता है. That is how it is been defined. Okay, इससे होता क्या है? इससे advantage क्या है? Anyone? So what is the advantage? Wheel friction is will not be there, sir. Yes, exactly. So the wheel wear will be less. Our wheel life, the life of our wheel will be significantly improved. It will significantly improve. है ना, कंपैरेटिवली आप अगर देखेंगे, बिकॉज हम वो रेजिस्टिव टाइप के वैसे टाइप की ब्रेकिंग कंपैरेटिवली उतना नहीं लगा रहे हैं, तो व्हील लाइफ पे इसके इम्पैक्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं पड़ेगा, है ना। तो दैट इज द वन थिंग व्हिच यू विल। Second thing, regeneration of power also will be there. Regeneration of power, so it is there, we already discussed. That is power savings and energy efficiency, of course. The 30% is the claim. I don't know how much true it is, I don't know. Okay. Wear and tear of the gear mechanism, braking mechanism. Wear and tear of the braking mechanism, yes, okay. For example, in the train 18, what kind of braking mechanism we have? Any idea? In train 18, like pneumatic brake. EP braking, yes sir. हाँ नहीं, EP brake मतलब क्या वो? Electro-pneumatic. There is a brake shoe which is getting contacted to the wheel? Axle mounted disc brake. No. Sorry, wheel brake, wheel mounted. Wheel mounted disc brake यहाँ पे थोड़ा सा different है. It has a wheel mounted disc brake. Axle mounted disc brake तो LHB में है. Here we have wheel mounted disc brake. Okay, we have again that is a separate topic. इस पे भी बहुत research papers हैं कि which one is better, axle mounted is better or wheel mounted is better, but both are followed. So they decided to go with wheel mounted. Of course, one of the primary reason for that was कि हमें एक्सेल के आसपास का एरिया खाली चाहिए था, क्योंकि हमें अंडरस्लंग we wanted underslung electrical equipment, है ना। हाँ, yes, not only traction motor तो है ही, traction motor के अलावा other equipments also we had to put underslung. तो सारी चीजें मिला के it was decided कि it is better to have wheel mounted. That is correct, you're right. So that is the, and improved reliability. Okay, it will definitely have greater reliability because since we have a distributed kind of a power kind of a system, now if now in a locomotive haul train, if a locomotive fails, then what happens? Entire formation will not have any movement. Entire train will get detained. And if there is, of course, if there is an axle lock, then to even in train set also वो भी fail हो जाएगा. Axle lock तो बहुत, it is a bad thing. But other than that, if you have any other failure, है ना, तो locomotive तो गया, detain हो जाता है. But in this train set, we can always bypass, we can isolate, and we can always run the train set. We can always run the train set, and we can get that speed. Even we can get the top speed. I think with even 60% traction motors working, we can get the top speed. So that is the kind of a system we can have. We have. Okay. So that is why it is more reliable. That is why more reliable. Okay. And improved line capacity.
Of course, it clears due to greater acceleration, faster acceleration and deceleration. We are able to clear the section very fast. So line capacity will of course increase. So there are many advantages. You can just keep counting. Okay. So that is all from my side, dear participants. I hope it was not a very long drawn, boring lecture. Are No, there any sir. Thank questions? It's a very sweet and simple. Hello, sir. Sir. Hello. Can you Sir, why One at a time. 18, sir? One at a time. Mr. Shayan Das, I think you are asking a question. yes, sir. Can you again Hello. what is the advantage of distributed power in coaches? Advantages I said ना मैंने वही बता distributed power का it is energy होता है मतलब it is energy coach है ना advantages like it will have better acceleration deceleration, it will be energy efficient, okay, maintenance requirement will be comparatively lesser. Again, this is again a disputable topic. You can have an argument with me कि mechanical maintenance कम हो जाएगा लेकिन electrical maintenance तो बढ़ जाएगा. So again, this is a disputation topic, है ना? But for the course, I would like to say कि reduced maintenance, reliability will definitely improve. इसमें कोई doubt नहीं है. Reliability तो improve होगा ही होगा, इसमें कोई doubt नहीं है, ठीक है? Because locomotive failure वाले और वो सारे issues काफी हद तक आप address कर सकते हैं. You can many failures, even if the failure occurs, you will be able to still take your train set, run your train set, and you'll be able to clear the section. You'll even be able to reach your destination also without a replacement. That is the main concept, है ना? And because getting a new loco, getting that also comes at a greater revenue cost. एक empty loco को light engine run करके लाना लगाना उसका भी cost एक रहता है, detention रहता है. Those kind of things won't happen with the train set. This is one of the very big advantages. Okay. Reduction in pollution, again a very disputatious issue, but at least pollution at the point of use is less. ये तो कोई doubt नहीं है कि दिल्ली के अंदर ट्रेन सेट चल रहा है तो दिल्ली के अंदर धुआं नहीं होगा as per the orders of Delhi High Court. ठीक है, that may be happening in some other NTPC, that coal is burning and that coal वो सब ठीक है, no problem. But at the point of use there will be no pollution. है ना, post point of view से भी अच्छा रहेगा. Passenger comfort will improve. Train sets में there is no doubt about it. We are the train set which we have designed, even train 18. I will talk about it in my next lecture. The passenger ride comfort, a lot of thrust has been given to improve the passenger experience, which earlier we didn't used to pay much attention to, but now it has improved certainly. So that is a very big advantage. And of course, with better passenger ride comfort, the reputation of Indian Railways also improves. So that is a hidden advantage which I have not written, but it is there. Improved line capacity and all these things ये तो है. So there are many advantages इस तरीके से, है ना? Any more? Any other questions? Why it is named Train 18, sir? Why it is named Train 18? Because the plan was to roll out this rolling stock in 2018, and it was of course rolled out in 2018 December. इसका initial plan था कि 2018 में इसको चलाएंगे और सबसे पहला ट्रेन सेट टाइप का इस तरीके का ट्रेन सेट होगा भारत का, तो इसीलिए ट्रेन 18 नाम दिया गया, ना कि इसलिए क्योंकि इसमें 18 कोचेस है. इसमें 18 कोच नहीं है, इसमें 16 कोच है. वैसे कोच वाइज अगर आप गिने there are 16 coaches, but it is called Train 18 because it was rolled out in 2018. But now subsequently there are many more the other subsequent trains which train sets which will be coming. उनको basically train set बोला जाएगा. उनको मतलब रेलवे पार्लेंस में उनका नाम ट्रेन सेट रहेगा. उनको ना ट्रेन 18, ट्रेन 20, 22, I don't think उनको ये बोला जाएगा because multiple rakes will be coming in different years. तो अब उनको बस ट्रेन सेट बोला जाएगा. Okay, and currently the parlance which is being used for the 44 train sets, अभी production units को 44 train set का target दिया गया है, ICF being producing the majority of them, तो उसको ये लोग train set 44 बोल रहे हैं. 44 train set का target है, तो train set 44 project चल रहा है इनका, which they plan to roll out in a year or a couple of years. सर इसमें एक्सल लोड कैसे इंक्रीज किया जाएगा सर? में एक्सल लोड इंक्रीज क्यों करना है आपको? ये आपने कहा था सर कि एक्सल लोड इंक्रीज करना पड़ेगा करके. नहीं, एडहेसिव मास, यू सी एडहेसिव मास, द कांसेप्ट इज कि एडहेसिव मास आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, बट देयर इज अ ट्रेड ऑफ, ओके.
आप हमारा एक्सेल लोड अगर 16 टन के आसपास भी अगर हम एक्सेल लोड दे रहे हैं, ठीक है, 16 टन तक भी आप अगर एक्सेल लोड दे रहे हैं, तो यू हैव सफिशिएंट एडेशन, यू हैव सफिशिएंट एडेशन टू एक्सप्लॉइट द ट्रैक्टिव एफर्ट कर्व, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या है ना, स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट चाहिए, यस और नो, वी नीड व्हाट वी नीड, हमें ज्यादा एडेसिव मास स्पीड के लिए नहीं चाहिए था, हमें एडेसिव मास स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट के लिए चाहिए था ना। लोकोमोटिव में क्या है कि सारा के सारा लोड फ्रंट एंड में है, इट इज ऑल एट द फ्रंट एंड ऑफ द रेक, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी ट्रैक्टिव एफर्ट को। बट डिस्ट्रीब्यूटेड पावर में द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, so the requirement of the tractive effort due to the distribution, so per individual कोच के हिसाब से देखेंगे, पर इंडिविजुअल एक्सेल्स को रिड्यूस हो जाता है, इट गेट्स रिड्यूस्ड। ओके, मतलब मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं कि एक लोकोमोटिव में कितने पावर्ड एक्सेल्स हो गए, 6 पावर्ड एक्सेल्स हो गए। ओके, एक ट्रेन सेट में कितने पावर्ड एक्सेल्स हैं, हाउ मच डिड वी कैलकुलेट, हाउ मेनी पावर्ड एक्सेल्स आर देयर इन ट्रेन 18? 32। हाँ नहीं 32, हमारे, हाँ ठीक है, टोटल 64, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको नंबर ऑफ पावर्ड एक्सेल्स, यू कैन सी देयर इज अ बिग डिफरेंस, यहाँ पे 6 था, यहाँ 30 प्लस जा रहा। तो अगर इतने ज्यादा आपके पावर्ड एक्सेल्स हैं, तब एडेसिव लिमिट, तब आप एडेसिव मास पे आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, बिकॉज यू विल गेट दैट स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट जस्ट बिकॉज ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ एक्सेल्स। जो n का वैल्यू मैंने बताया था in my formula, n is the number of powered axles, आपने नंबर ऑफ पावर्ड एक्सेल्स को बढ़ा दिए, तो अपने आप आपको ट्रैक्टिव एफर्ट मिल जाएगा, यू विल गेट इट, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। बट उससे एडवांटेज ये होगा कि लाइटर एक्सेल लोड की वजह से आप स्पीड भी ज्यादा अटेन कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू अटेन ग्रेटर स्पीड आल्सो, सो दैट इज द प्ले, दैट इज द गेम। ओके सर, ओके सर ये जो डिफरेंशियल एक्शन था अभी जो कन्वेंशनल कोचेज में, तो उसका मतलब पर्पस ये था कि जो व्हील ट्रेड है हमारा उसकी स्किडिंग ना हो, तो वियर एंड टियर कम होगी। अगर इसमें हम टेपर कम कर रहे हैं, फ्लैटनेस बढ़ा रहे हैं एक तरीके से, नहीं तो नहीं ये नहीं डिफरेंशियल एक्शन नहीं, हमने जो पेपर दिया था वो तो मोस्टली डिफरेंशियल एक्शन कर नेगोशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के दिया था, ठीक है जी। द बेसिक आइडिया बस कि हम कर्व को इजीली नेगोशिएट कर पाए without causing a severe discomfort to our passengers, without causing a serious problem to our bogie, हमारे बोगी और सस्पेंशन सिस्टम पे ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए, ठीक है, और हमारे व्हील पे ज्यादा व्हील फ्लैंजिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने दिया था। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ट्रेड कोनिसिटी देने की वजह से इवन फ्लैट ट्रैक पे भी देयर इज ऑलवेज फ्लैंजिंग व्हिच इज अकरिंग। फ्लैंजिंग मतलब आप समझ रहे हैं, फ्लैंजिंग फ्लैंजिंग मतलब हुआ कि ये फ्लैंज है, ये फ्लैंज है और ये आपका ट्रैक है। आइडियली हम क्या चाहते हैं कि इंपैक्ट ऐसे होना चाहिए, हमारा ट्रैक और ट्रेड कांटेक्ट में होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे फ्लैंज और ट्रैक के बीच में भी कांटेक्ट हो जाता है ड्यू टू द साइनसोइडल मोशन। ओके, तो उस वजह से फिर आपके व्हील डिफेक्ट्स धीरे धीरे क्रिएट होते हैं, शार्प फ्लैंज, थिन फ्लैंज, रूट रेडियस सब गड़बड़ाने लगता है। ओके, बट फ्लैटर ट्रेड से क्या होगा, once you provide this flatter tread, आपका lateral movement कम होगा, आप जिसको डायनामिक ऑगमेंट भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग वाले इसको डीए बोलते हैं, डायनामिक ऑगमेंट, आपका डायनामिक ऑगमेंट कम होगा और इसकी वजह से या ये फ्लैंजिंग फोर्स यहाँ पे कम रहेगा, फ्लैंजिंग फोर्स कम रहेगा तो डीरेलिंग की टेंडेंसी कम रहेगी, है ना। सो दैट एडवांटेज यू आर गेटिंग एंड यू कैन, जितना ट्रैक्टिव एफर्ट, जितना एनर्जी पावर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ट्रैक्शन मोटर से, वो एनर्जी ऐसे साइड में वाइब्रेट हंटिंग ऑसिलेशन में वेस्ट ना होके सीधे जाने में यूटिलाइज होगी, है ना। ओके, मतलब वो सारा एनर्जी, समझ रहे, एनर्जी क्या है, वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकती, वन फॉर्म टू अदर चेंज होती है, तो वो एनर्जी जो है, थोड़ा बहुत एनर्जी हमारे हंटिंग ऑसिलेशन में जा रहा था, काफी एनर्जी स्ट्रेट जाने में जा रहा था, बट हंटिंग ऑसिलेशन हम कम करेंगे तो हम सीधे जाने में, स्ट्रेट ट्रैक पे ट्रैवल करने में हमारा एनर्जी अच्छे से कंज्यूम होगा, विल बी एबल टू गेट ग्रेटर एक्सेलरेशन, यू नो, एंड बेटर स्पीड्स, वो रहेगा। तो वो पर्पस जो है हाँ सर, ये प्रॉपर्टी फिर हम एलएचबी मतलब जो फिएट बोगी है या हमारे आईसीएफ बोगी उसमें क्यों नहीं कर सकते सर, जब एयर स्प्रिंग का प्रोविजन कर दिया गया है? मतलब दिस इज अ पॉलिसी मैटर, आई एम नॉट डिसाइडिंग द पॉलिसी। देखिए 100 हम लोग जो अपना ट्रेन ऑपरेशन करते हैं 110, 120, 130, 160 तो रेयर,
तो 130 तक इतना कोई सिग्निफिकेंट वो जो इम्पैक्ट है कम है, मतलब कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो मैं टेपरिंग जो फ्लैटनिंग की बात कर रहा हूँ, दिस इज फॉर स्पीड्स, हायर स्पीड्स 160 से ऊपर, 180, 200, उसके ऊपर अगर हम आगे का विजन बनाएंगे तब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब आपको करना पड़ेगा। तो दैट इज माय ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम व्हाट। हाँ बताइए। लेकिन सर कर्व निगोशिएशन में तो प्रॉब्लम होगा सर, ये ड्रॉबैक तो होगा इसमें सर। नहीं होगा। देखिए मैंने बोला है कि व्हील कोनिसिटी को कम करना है, मैंने खत्म करने को नहीं बोला है। मैंने बोला है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ एक्चुअली, ये तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है एंड ट्रायल्ड है। 1:20 को मैंने 1:40, ये वो ऐसा नहीं हो रहा है कि 1:∞, जीरो नहीं हो जा रहा है, पूरा फ्लैट नहीं हो रहा है। तो देयर इज ऑफ कोर्स सम कोनिसिटी तो होगा ही, बट द क्वेश्चन इज कि ऑप्टिमम वैल्यू कितना है, वो स्टडी करने की जरूरत है। और ये जो हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेटर्स हैं दुनिया के, उन्होंने वो स्टडी कर लिया है एंड दे हैव कम 20 इयर्स पहले 1995-96 में जापानीज रेलवे भी जापानीज भी 1:20 यूज करते थे, है ना, बट वो 1996 में स्विच कर गए। देयर इंजीनियर्स दे केम टू द कंक्लूजन कि 1:40 करेंगे तो हमारा हंटिंग ऑसिलेशन कम होगा, पैसेंजर कंफर्ट बढ़ेगा, तो दे डिड दैट। जो M700 जो उनकी सीरीज थी, उसमें उन्होंने 1:40 के व्हील बनाए और उनको, एंड दे सॉ द इफेक्ट, उन्होंने प्रूव किया है, देयर आर रिसर्च पेपर्स व्हिच हैव प्रूव्ड कि यस 1:40 इज बेटर। एंड सिमिलरली अदर रेलवेज आल्सो हैव फॉलोड सूट, हाई स्पीड, बट 200 kmph के ऊपर। बट आप 110, 20, 30 में चलाएंगे गाड़ी, तब कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है और तब चलेगा। बट आपको हायर स्पीड, माय पॉइंट इज कि आपको हाई स्पीड ट्रेन सेट बनाने हैं, तो तब आपको ये मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सर उस केस में क्या मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व जो है वो भी उसमें भी फर्क पड़ेगा कुछ? फर्क पड़ेगा, करेक्ट, पड़ेगा। ये मैं बताना भूल गया कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व आप उतना कर्व नहीं डिग्री दे सकते, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता कितना आपको लिमिट करना पड़ेगा, आई एम नॉट अ सिविल इंजीनियर, बट आपके जो कर्व नेगोशिएटिंग कैपेबिलिटी थोड़ा तो अफेक्ट होगा ना, तो आप उतने शार्प कर्व्स नहीं नेगोशिएट कर पाएंगे हाई स्पीड्स पे। तो कर्व जनरली बहुत माइनर वाले कर्व्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं हाई स्पीड पे। तो यही तो हाई स्पीड का यही है कि आप घाट सेक्शन नहीं बना सकते, घाट सेक्शन पे ट्रैक नहीं बना सकते, आप कर्व्स नहीं बना सकते, आप कोंकण रेलवे पर हाई स्पीड नहीं चला पाएंगे। आपको कम से कम घाट सेक्शन, फ्लैट सेक्शन चाहिए। अगर पहाड़ियां बीच में आ रही है तो आपको टनल बनाना पड़ेगा, और वही हो रहा है हमारे जो अभी करंट प्रोजेक्ट है उसमें यही हो रहा है। यू नीड मोस्ट ऑफ द पैच टू बी मोर और लेस स्ट्रेट। थोड़े बहुत माइनर कर्व्स हो सकते हैं, 5 किलोमीटर के कर्व रेडियस के हो सकते हैं, उससे कम के नहीं कर पाएंगे आप फॉर ग्रेटर स्पीड्स, आप नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। और जो मैंने टिल्टिंग मैकेनिज्म बताया, उससे 30 kmph का स्पीड रेस्ट्रिक्शन, मतलब अगर वो टिल्टिंग मैकेनिज्म नहीं होता तो एक पेपर में था कि 200 kmph तक का स्पीड रेस्ट्रिक्शन लग जाता था हाई स्पीड ट्रेन के लिए, पर टिल्टिंग मैकेनिज्म के लिए आने की वजह से 270 kmph पे आप कर्व को नेगोशिएट कर पाते हैं। ये 70 kmph का अंतर पड़ जाता है ड्यू टू द टिल्टिंग मैकेनिज्म। Any other question, please? Sir, is there any disadvantage of this design in point of view derailment and anti-telescopic and anti-climbing? Which design? Train 18. No, there is no disadvantage. In fact, there is advantage only. Disadvantage तो मुझे तो नहीं लगता कोई disadvantage. Anti-telescopic, anti-climbing के point of view से मुझे I don't see there is any disadvantage. It is equally good. मतलब ICF is not good, we know that. ICF तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उस हिसाब से अच्छा नहीं है, is not good. But ट्रेन 18 के डिजाइन में ऐसा कोई इशू नहीं है। We have semi-permanent type couplers. Semi-permanent type couplers हैं जिसमें जो 600 किलो न्यूटन का आई थिंक टेंसाइल फोर्स और 1000 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव स्ट्रेस ले सकते हैं। तो दे आर गुड इनफ एंड दे प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ एंटी टेलीस्कोपिक फीचर आल्सो। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डिसएडवांटेज है। सर ये ट्रेन 18 में टिल्टिंग के लिए ये मतलब एयर स्प्रिंग और योर डैम्पर ही है ना? नहीं, ट्रेन 18 में टिल्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, कोई टिल्टिंग मैकेनिज्म ट्रेन 18 में नहीं है। मैं तो इन जनरल बता रहा था, ट्रेन 18 में देयर इज नो टिल्टिंग मैकेनिज्म, बट हाँ उसमें एयर स्प्रिंग भी है और योर डैम्पर भी है, दोनों है। यस, वो तो हमारे एलएचबी कोचेस में भी है। आजकल के एलएचबी कोच जो आ रहे हैं
उसमें एयर स्प्रिंग है तो योर वो मैं वही जानना चाहता था कि LHV कोच से कुछ अलग डिवाइस लगाया गया है क्या ट्रेन 18 में इसके लिए? नहीं, LHB कोच से जो सबसे मेजर मॉडिफिकेशन जो किया गया है वो है कि आपका बोल्स्टर हटा दिया गया है। देयर इज नो बोल्स्टर। ठीक है, ये सब मैं बोलता आपको ट्रेन 18 का एक अलग से लेक्चर है मैं वेडनेसडे को, बट आई विल टेल यू ऑन दैट डे आल्सो। बोल्स्टर आपका हटा दिया गया है, आपका सिर्फ एयर स्प्रिंग सस्पेंशन है, योर डैम्पर्स हैं और बोल्स्टरलेस टाइप ऑफ आपका बोगी है। ठीक है, और बोगी पे अच्छे से स्टडी किया गया है, इंपॉर्टेंट कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको स्ट्रेंथन किए गए हैं सो दैट बोगी में क्रैक्स ना हो। बट अगेन ये अभी ये ज्यादा साल अभी चली नहीं है ना, तो आगे जैसे व्हेन टाइम विल प्रोग्रेस कुछ इश्यूज पता चलेंगे, बट वो डिजाइन मॉडिफिकेशन भी होगा। इट इज अ कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग प्रोसेस है ना, आप एक बार में कोई अच्छी चीज डिजाइन नहीं कर सकते, कुछ गलतियां रह जाती हैं तो विद टाइम विल इंप्रूव आल्सो, देयर इज नो इशू। बट करेंटली और कोई डिफरेंस इसमें तो बोगी पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव अ सेपरेट लेक्चर ऑन ट्रेन 18 बोगी। लेट मी टेल यू, हमने SSC, देयर इज वन SSC बोगी डिजाइन इन ICF, वी हैव इनवाइटेड हिम, ही विल बी टेकिंग अ सेपरेट लेक्चर ऑन बोगी ऑफ ट्रेन 18 ओनली। आप जितने भी डाउट्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, वो और अच्छे से आपको एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव दे सकते हैं इस पे। सर अभी जैसे फुल सिटी रिड्यूस करने की बात करी, सपोज 1/40 की इंक्लिनेशन आप रेट लेते हैं व्हील में, तो क्या वो रेल का इंक्लिनेशन 1/20 पर चलेगा या उसमें भी 1/40 एंड अबव जाना होगा? So that is a very good question sir। ये चीज मैंने स्टडी नहीं की है कि रेल का इंक्लिनेशन कितना आपको करने की जरूरत है, मे बी उसमें भी कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि मैंने सिर्फ रोलिंग स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ध्यान दिया था। इट इज अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव पॉइंटेड आउट, बट मुझे रोलिंग स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से बस पता है कि दिस मॉडिफिकेशन हैज बीन डन। अब रेल में उन्होंने क्या मॉडिफाई किया है, क्योंकि एक तो हमें थोड़ा उस एरिया में हमें आइडिया भी मुझे थोड़ा कम है एज अ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर, तो ये आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इसमें कोई रेल में हमने चेंज किया है कि नहीं। बट अपने रोलिंग स्टॉक के रेल में तो दैट डिफरेंस दैट चेंज हैज बीन डन फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स वो अब्रॉड। थैंक यू सर। Okay, so if there are no further questions, it's already lunch time. I am way past my time. I'm sorry. We'll close this session. और जो सेकंड सेशन होगा वो 2:30 उसका टाइम है, 2:30 से आप लोग ज्वाइन करके रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पे। दिस विल बी ओपन। ये PPT जो है irime.org जो हमारे मूडल का कोर्स पेज है उसमें अपलोडेड है, उस वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत आई तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसमें भी PPT यू विल बी एबल टू गेट द PPT। वी विल पुट इट on Friday or on Thursday. We'll combine in a combined manner, we'll put all PPTs, so you need not worry about the PPT. Okay, so thank you everyone, have a good lunch and we'll meet back after the lunch at 2:30. Thank you. Thank you sir। Thank you sir, thank you। Thank you sir। Thank you sir. Nice lecture. Thank you sir.